Hi, Abhilash. Yes, Matlesh, are you trying to say something? Actually, we are anticipating a few more students. So, Oh, yeah. So, we'll be like starting in a few minutes. Sorry to keep you waiting. okay, no problem, sir. No problem. I'll wait. Okay, so hi, good evening, everyone. And today we would be doing our orientation process. And for this pre-orientation session, our major motto here is to get a overview about the job roles that are related in the data field. So our keyword for the session is data. So we will explore the lot of job roles that are defined around this keyword. Our major focus would be on job roles such as business analyst, data analyst, and a data scientist. And as a platform, Coex, what we would be offering you in the term of courses, what courses we are offering you, what are the additional things such as the training quality, the projects, and all those things would be discussed. And in between, if you have any questions, if you have any doubts, just feel free to ask. Okay, don't shy away. If you if you don't want to unmute or ask directly, feel free to write in the chat box. I'll be taking the questions from the chat box too.
So I think we are good to go now. I hope I'm audible, like I'm clearly audible to each and every one of you. So can I get a yes or something kind of confirmation in the chat box that you are able to hear me clearly? Yeah, I think someone is writing. So yes, okay, great. So I think we are good to go now. So before moving forward, just a quick introduction about Coex. So Coex, what is Coex? Coex.live is a leading online learning platform that offers various live learning programs which are highly in demand. Okay, learn modern skills in 100% live learning mode directly from the industry expert. So before moving forward, let's just try to decipher what we mean by a few keywords here. So in this brief introduction, we have mentioned the courses are highly in demand. Okay, so whatever courses we are offering you, those courses we have done a lot of research on, and we have made sure that these courses are highly in demand within the industry. Now, how do we know that these kind of courses are highly in demand in the industry? So the major portion comes from our good amount of industry experts that we have in our database. So we have 500 plus trainers in our database. Now, these trainers are not just your like regular teachers or like teaching professionals in school or colleges. These people are actively working in the industry. So they are also connected with the industry. They are working in the industry as a business analyst, as a data analyst, as a data scientist. And whenever they get like maybe on the weekends and in the evening, whatever time they get, they dedicate it to teaching and training profession. So from these experts, we get the like insights from the industry. What are the things that are in the market right now? What is the interviewer looking for? What are the companies looking for? How much AI is needed in what job roles? What is the programming language that is like going on in the industry? So these kind of insights we draw from our trainers. We also have a research and development team within our organization. So major focus is to pick out the skills that are highly in demand, that are highly relevant as of now, and we provide you with a 100% live learning mode. Okay, so this 100% live learning is what we mean by it here is that whenever there is a live session, it is kind of a streaming kind of thing, like you are seeing what I'm saying you, right? So it is live. But in some cases, it could be just a live stream and you are not able to like ask questions or communicate. It is not a two-way communication always, right? So our classes here are absolutely a two-way communication. It is just like let's say a college classroom or a school classroom where you are sitting with your peers. So even though we are doing in a Zoom, that is our online platform, but our focus here is to keep it like interactive and as closer to the regular classes as possible. So that is why we keep it as a 100% live learning. Means you can obviously ask anything in between. It's not like you just have to be a viewer. You can be an active participant. So you can unmute, you can ask your doubts, you can write in the chat box, you can communicate with each other in any way that you want to. And that is how we try to achieve what we call as 100% live learning. Okay, then there is a large students community that we have. So what is this community? It includes all the students that have been passed from our institute, our alumni, our students that are who are currently enrolled in particular batches that are in the learning phase right now, and also the students that are connected to us on like many social media platforms. So like YouTube, they are connected on LinkedIn. So also that is a good community that we have built around a lot of trainers that we particularly discuss a lot of things with, and they train our students, and a lot of students that are the part of our learners community. Now 2500 plus live sessions is what we have conducted as of now. So we have already surpassed this amount. This has been a lot of batches that we have completed. A lot of batches are ongoing in different fields. And 100% placement assistance is something that we offer you. Like when you will complete your course curriculum, you will be getting 100% assistance in the placement. Now, this thing we will also discuss in the later part of the session, where we will focus on how we will be providing you this 100% thing. So I'll explain everything in detail. This was just a brief introduction. I hope it is clear to each and every one of you. And again, I'm repeating, don't like shy away from asking anything that you feel like. Now to begin with, what we offer, right? So what do we offer? These are the list of courses. So this is not an exhaustive list of courses. We keep on adding the skills that we think are like relevant in the market. We keep on upgrading our courses. We keep on bringing new courses that we think are relevant and can get you placed in the market as of now. So our major focus for today are these three courses: data science, data analyst, and business analyst. Major focus. We will be also getting some like a glimpse around of what is CBAP and how we will provide you the training for this CBAP course. Okay. And then we have some additional courses which are like in our repository. If you want, you can go for them. But our major focus is not these courses. So I'll quickly explain these three courses also. So moving forward, first is the AWS Cloud Architect, which is Amazon Web Services Cloud Architect. So if you want to go into cloud computing,
if you want to make a career in the cloud computing department as a cloud architect, solutions architect, basically working on the services offered by a cloud platform. So AWS is a cloud platform by Amazon, and it is the leading cloud platform in the world right now. So we provide the courses where we cover all the services by AWS. Okay, if you want to become a cloud engineer, cloud architect, any kind of cloud related roles, this course is suited for you. Then there are two different development courses that are Python and full stack developer. So this full stack MERN stack developer covers your JavaScript and MERN as in MongoDB, Express, React and Node. We will not go much into a detail, but it is someone for who wants to do a website or application development kind of role. Similar is the Python developer role, but here the programming language that is used is Python. Okay, so Python is the programming language used in a Python developer course where we will be learning frameworks based on Python. And in the full stack developer, MERN stack developer course, our focus would be on JavaScript and other things. So these are some, like, I'm just giving you a summary. Our major focus here is the data science related roles, not data science, but data related. So data science, data analyst and business analyst. So moving forward, this is a quote that I usually keep in my pre-orientation session. I'll just explain you a little bit here what is happening. So see, data analytics is complex yet simple. So complex and simple are actually opposite words. So this word is like a kind of an antonym of this. And this figure of speech is called oxymoron, which is not relevant for us right now. But this quote is, okay. So it is complex for those people who are, like, let's say, very much new in the industry, who are not having any idea of what data analytics is. It's like someone who has never seen a car, has never sit in a car, and you give him the parts of a car to assemble, he will think that, okay, it is the most complex thing he has ever seen. But it is very simple for, let's say, a mechanic. Okay, for a mechanic, if you will give him the parts, he will quickly assemble because it is his day-to-day job. So once you get into the sector and you like learn these Excel tools, use these Power BI kind of tools, and you're working for a few months or few years, you will let's say in some particular time frame, you will notice that these things are not as complex as you used to think, and you will like get a hands-on experience on these kind of thing. You will understand that these are much more simpler to you. But even at a point when it is more simple to you, you will go to someone who is not aware of these things. He will think that you are doing something very complicated because maths is involved, numbers are involved, but that is not the case when you are doing when you're doing the actual job. So once you get like accustomed to it, it is a very simple kind of thing. Not very simple to like, I'm not demeaning it, but you have to put in some hours to learn the things. But when you are like in a flow to learn the things, it can become simple for you. Now, what are these companies and what is this thing? Let's just quickly discuss. So for the past decade or so, almost every single multinational company, especially those in the tech sector, which is the IT sector, have been reliant on big data and data analytics to drive their company. Some companies that rely heavily on data analysis are this. Okay, so let's try to build a little bit story here from the timeline. So since 2015 and 2016, okay. So in 2016, as Jio came and it disrupted the whole market, a lot of people suddenly has access to a lot of internet. So these like initially we kind of used 1 gigabytes of data for maybe a month or something. But when Jio came, they provided 4 GB daily data for free and then 1.5 GB. But even at a daily rate, 1 GB of data to each and every citizen was like a large amount of data. Okay, at that point of time. And in 2015, actually, internet started like getting a lot more towards the stage where people had access to internet. So people were using social media even on 2G and 3G services. A lot of libraries, public institutes and railway stations, airports kind of tried to install a lot of Wi-Fi stations. So people had access to internet. Like before 2015, it was very limited to maybe a few people who had access to Wi-Fi, maybe some government offices or some premium companies. But after 2015-16, the like whole thing changed on a much larger scale. So when this drastic change came and now suddenly we had a lot of data to access, the companies that took the first mover advantage were these companies. So Google at the time was the most prevalent search engine. It is also now. So whatever we were searching on this internet that we had, we were searching on Google. We were talking to our friends on Facebook and Instagram. We were connecting. We were using Spotify to listen to music. And like people were using other apps also like Wink and whatever Savan, etc. was there. But Spotify was leading because we are talking about international scenario here, okay, not just India. And Netflix, people were streaming things because it was something that broke away from the television cable, and now you don't need to like watch ads and something. And Amazon was there, people were ordering online a lot of things. Okay, so because Amazon was like having a lot more things and it was a lot more cheaper and comfortable, right? So these companies took the early movers advantage when the internet came because they were very active in the market. They collected a lot of data. So initially, when the companies were just getting accustomed to this whole scenario, these companies has already started to gather the data of their users.
So Google now had the data of, let's say, around half of the world, what they are searching, what they are interested in, and used this data to do their big data and data analytics. Now this data analytics gave them opportunity to, let's say, give targeted advertisement and to generate a lot more revenue than they were doing in the initial stages. Okay, because Google and Facebook essentially don't have a revenue model. If you will look, they are providing some everything for free, so their revenue model is mostly based on the ad revenue. So they were having a lot of data, and now they can show you targeted ads. So that is how the industry came into the market after the boom of the internet. A lot of things changed, and these companies took the first movers advantage. And now, like in 2024, even the data is being generated is already surpassing a higher limits. And even at this stage, a lot of small scale or medium scale companies are also very much interested in how the data thing works. Okay. So moving forward, how is data being created? Okay, I think if we keep it maybe bilingual, people would have more interest. So okay, I will try to mix it up. Okay, so that it does not get a little bit more monotonous. So how is data created? Okay, data create कैसे होता है? So these are some of the examples that we have shared here. Okay, so how these things get created? First is humans. Like whatever you are doing on Instagram, YouTube, social media, anything you are doing, you are generating the data. Then machines, as I like to give the example of how the scale is, the biggest scale that you can imagine is a satellite. Okay, a satellite that is revolving around the earth. Okay, sorry for the size of the satellite, it is bigger than earth, but sorry for my term. Okay, so this satellite is giving the data back to the sensors. And like NASA or ISRO, whoever has launched the satellite, so data is being generated from the machines. This is a very large scale example, but if you will go to a small scale example, let's say your wristwatch, like let's say your smartwatch that you have in your wrist right now, this smartwatch is also giving the data to your mobile phone, like your heart rate, your number of steps you are taking, your stress, and all the data that they connect, your sleep, number of hours you're sleeping, etc. Right? So from this very small wristwatch to this very large satellite that is revolving around in the space, data is being generated from both the machines. Okay, so from smaller to larger machines, every machine that is connected to internet or connected to any device is generating a lot of data. Then human machine interaction can be deemed as when you are filling the forms, like filling a Google form, filling a UPSC or SSC kind of government examination form, filling your idea. So in those kind of form fillings, a lot of data is being generated in a very what we can say formatted way. Okay, so data generated in this kind of thing is very like already transformed and uniform data. And organizations such as banks, okay, very like the most biggest example would be banks and financial institutions. So every transaction that we are making is generating a lot of data. Now we have discussed what are the techniques to create data. So if any one of you at this point want to like share anything that you think is contributing to the generation of data to this very day, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इस टाइम पर that is very much of an example of creating a data. Anything, human interaction, machines, organization, whatever comes to your mind, whatever industry you are working in, whatever things that you have worked on, where you think that a lot of data is being generated. Any examples you want to share? I think a lot of people are very much new to this, but moving forward, maybe you will get a lot more idea about how things are created and how data is being generated. So मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करता हूँ. So let's say हम जब भी यहाँ से जाते हैं, let's say मैं और मेरा एक फ्रेंड है, and we go to a tea shop. ठीक है, हम चाय पीने गए, 20 रुपए का हमने पेमेंट किया ऑनलाइन. ठीक है, सो मैं यूपीआई से पेमेंट करता हूँ यहाँ पर, एंड मैं वापस चले आता हूँ. सो मेरे लिए बहुत ही इंसिग्निफिकेंट है, 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, 2 मिनट लगे, पेमेंट किया, वापस चला गया. बट इफ वी लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, बहुत सारा डेटा यहाँ पे जनरेट तो नहीं हुआ, बट बहुत सारी जगह पे जनरेट हुआ. ठीक है, कैसे? सो मैंने जब पेमेंट किया, सो मेरा एक बैंक अकाउंट है, लेट्स से मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस में यहाँ पर. ठीक है, एक्सिस बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, एंड आई एम यूजिंग गूगल पे टू जीपे टू पे. ठीक है, सो यहाँ पे जीपे से मैंने यूपीआई का यूज करके, वो जो मेरा मर्चेंट था जिससे मैंने चाय खरीदी, ही वॉज यूजिंग फोन पे. फोन पे का क्यूआर था, मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दिया, ही वॉज यूजिंग फोन पे. सो फोन पे, बट उसका बैंक अकाउंट किसमें था? उसका बैंक अकाउंट था लेट्स से एचडीएफसी में. ठीक है, सब नाउ यू विल सी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है सिर्फ 20 रुपीज का, बट ये ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है एक्सिस बैंक में, मेरे बैंक अकाउंट में, लाइक 20 रुपीज हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम पर्टिकुलर अकाउंट टू अनदर अकाउंट. देन जीपे में वो रिकॉर्ड होता है गूगल पे के पास. देन यूपीआई की जो सेंट्रल रिपोजिटरी जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन वहां पे रिकॉर्ड होता है. देन फोन पे वो रिकॉर्ड करता है कि 20 रुपीज रिसीव हुए हैं यहाँ पे. एचडीएफसी बैंक वो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है कि यूजर के अकाउंट में 20 रुपीज रिकॉर्ड हुए. So just this single transaction is creating a particular like data at 5 different places owned by 5 different organizations. ठीक है, फोन पे कोई और ओन करता है, एचडीएफसी कोई और ओन करता है, एक्सिस कोई और ओन करता है. So this is kind of an example कि whatever small things we are doing in our day-to-day life is creating a lot of data in a lot of different places, जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं है, और अवेयर भी है तो हम नोटिस नहीं करते हैं उसको डे टू डे चीजों में. लाइक
हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है से ये डेटा जनरेट हो रहा है। नाउ व्हाट दिस डेटा इज बीइंग जनरेटेड, ऐसा नहीं है कि वो डेटा वहां पे जाता है और वो बस उसको मेंटेन करके रखते हैं या फिर उसको बाद में डिलीट कर देते हैं, 1 साल हो गया तो ऐसा नहीं है। वो जो भी डेटा है उसको वो यूज करते हैं अपने कस्टमर सर्विस को अच्छा करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको समझ आता हो कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द सर्विसेज। बट बिफोर मूविंग ऑन टू इट, लेट्स जस्ट लाइक एज द एंड ऑफ द स्टोरी कि डेटा क्रिएशन शुरू मतलब कैसे इंटरनेट से वो बूम हुआ एंड कैसे डेटा क्रिएट होता है। मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस कि कितना हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्केल ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये एक्चुअली 2022 का डेटा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक अभी तो हम लोग 500 प्लस जा चुके हैं, बट इवन इफ वी कंसिडर दिस एज ट्रू, लाइक 328.77 मिलियन टेराबाइट्स हम लोग कर रहे हैं। सो ये एक और जब हम लोग का मतलब एक तो रिवॉल्यूशन जो हम लोग कह रहे हैं कि 2016 में आया आफ्टर जियो केम, अनदर थिंग दैट केम इन लाइक डिसरप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग वाज कोविड। सो इन 2020 कोविड केम, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इन 2016 इवन व्हेन 4G सर्विसेज वाज देयर, तो लोगों के पास फोन थे, बट सबके पास स्मार्टफोन उस टाइम पर भी नहीं थे। एंड ये जूम ऑनलाइन क्लासेस का उस टाइम इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। बट व्हेन दिस काइंड ऑफ लाइक 2020 में जब कोविड आया तो अब लोगों के पास मल्टीपल डिवाइसेस थे। लाइक इफ यू विल गो इनटू अ city like Bangalore, Pune, a lot of people have two different smartphones to connect with. Like one is office and one is for personal work. Then people have tablet to stream. लोगों के पास लैपटॉप होता है, मॉनिटर, Alexa. So like someone in a city will have at least from 2 to 5 devices. Usually सबके पास होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे लोगों के like in a single phone like family there would be one smartphone and one laptop. अब पर्टिकुलर पर्सन के पास दो दो पांच पांच डिवाइसेस है। सो उससे भी बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है बिकॉज एवरी डिवाइस इज क्रिएटिंग सेपरेट काइंड ऑफ डेटा। एलेक्सा में डेटा जनरेट हो रहा है, आपकी स्मार्ट वॉचेस में हो रहा है, ओके। सो हाउ मच अमाउंट वी आर जनरेटिंग 328.77 मिलियन टेराबाइट्स, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो हाउ मच डेटा दिस इज, 1 टेराबाइट इज एक्चुअली इक्वल टू 1024 GB। आई थिंक 1 GB सबको पता होगा क्योंकि उतना ही हमें इंटरनेट मिलता है जब हम रिचार्ज कराते हैं। सो ये सबको पता होता है, राइट। 1 TB इज समथिंग जो आपको लैपटॉप में स्टोरेज मिलता है यूजुअली, ठीक है। सो 328.77 जो हम लोग का एक एक दिन में जनरेट हो रहा है, ठीक है, इट इज बीइंग क्रिएटेड डेली। 328.77 we will multiply it by 1024 to convert it into GB, and then we will multiply it by 1 million. What is 1 million? It is 10 lakhs. Okay, so 10 lakhs. So this is the amount of data we are creating on a daily basis. अभी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है। आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, you will get an idea, but this is a very large amount of data. Now this large amount of data creates a lot of jobs in the market, ठीक है। इतनी सारा अगर डेटा है, इतनी सारी कंपनीज को स्टोर करना है, तो लोग उसके लिए चाहिए कि उसको स्टोर कैसे करना है, उससे प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ऑल द थिंग्स, राइट। So now comes the roles that are available in the data field. So these roles, if we will categorize them into, let's just like एक एक रोल तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, बट हम एक एक लाइक ग्रुप करके इनको समझ लेते हैं। एंड देन बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज है यहाँ पर, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रोल स्टैटिस्टिशियन। इट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम ऑल द बंच दैट वी हैव हियर। इट इज मोर ऑफ अ रिसर्च बेस्ड रोल। सो हम लोग के जो कॉलेज प्रोफेसर होते हैं जो PhD कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स है जिनके पास है, मोस्टली जो गवर्नमेंट बॉडीज है जो हम लोग की सर्विस कंडक्ट करती है, वहां पे स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो ये सारा डेटा लेके कुछ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वो बनाते हैं मोस्टली। सो इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल काइंड ऑफ अ रोल। एंड बिफोर दिस कंप्यूटर एंड डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सब चीजें नहीं थी, उससे पहले भी स्टैटिस्टिशियंस आर देयर। लाइक इन अर्ली 50s 60s 70s में जब गवर्नमेंट वाज यूज्ड टू हैव दिस डेटा ऑन पेपर और वहां पे सब कुछ कॉपी पेन से होता था, कंप्यूटर वाज नॉट देयर, तब भी स्टैटिस्टिक्स वाज देयर एज अ ब्रांच एंड statisticians were still doing their research and all those things, but they were not doing on computer, doing on pen and paper. And now it has like shifted a lot, digitally हो गया बहुत कुछ, but still the core values remain the same. So statisticians more towards academia, more towards the research field. Now these 5 roles that you can see here, these 5 roles are more related to the business domain, ठीक है। So यहाँ पर business domain में business is the most important part. So whatever data we have, उससे हमें कुछ ना कुछ business outcome चाहिए. And another thing is that these are not very strictly like एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं है। सो फॉर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ रोल्स, आपको बहुत ज्यादा कोई मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब बहुत डिटेल में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ठीक है। सो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट आर देयर, देन BI डेवलपर, BI एनालिस्ट एंड MIS एग्जीक्यूटिव। सो MIS एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन होते हैं वहां पे जो हम लोग का डेटा का मैनेजमेंट होता है यूजली MIS एग्जीक्यूटिव करते हैं। सो इन हॉस्पिटल इफ द रिसेप्शन इज देयर एंड वो डेली पेशेंट्स का एनरोलमेंट जो भी होगा, या HR जो आपका अटेंडेंस वगैरह वो करते हैं, तो एक्सेल में मोस्टली यहाँ पे काम होता है। एंड जो डेली ऑपरेशनल डेटा है वहाँ पे MIS एग्जीक्यूटिव मोस्टली यूज होते हैं। देन दीज रोल्स दैट आर जस्ट बिलो देम, जस्ट क्लियर दिस ऑल थिंग्स। एंड ये जो नीचे आपके 6 रोल्स हैं,
दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। ठीक है, ये जितने भी रोल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। डेटा साइंटिस्ट हम लोग करेंगे आगे डिस्कस इन मच मोर डिटेल। मशीन लर्निंग इंजीनियर इज समथिंग जो हम लोग के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को क्रिएट करते हैं। एमएल ऑप्स इंजीनियर जो है वो इनको ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ऑपरेशंस आई थिंक जो इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, जो भी एल्गोरिदम है उसको डिप्लॉय करना, उसको लैपटॉप में, उसको मोबाइल के फ्रेंडली बनाना, उसको क्लाउड में डालना, जो भी चीजें यहाँ पे। एंड डेटा इंजीनियर्स इनके लिए डेटा पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कि जो भी डेटा ये लोग यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए वो इनको स्मूथली जाते रहे। ठीक है, सो ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से एक वेग तरीके से बताया। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, यू कैन डू योर रिसर्च, इवन यू कैन आस्क इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द जॉब रोल्स इन डिटेल, बट इट विल टेक a lot more time for you to understand. Okay, then the CV engineer and NLP engineer are actually what we can say part of or specialized form of machine learning engineer. So a CV engineer is a machine learning engineer, but वो image data पर काम कर रहा है। So जो भी आपकी Google Lens वगैरह जैसी चीजें हैं जहाँ पे you will upload a picture and वो let's say I upload the picture of a bird and it will say कि this is a hummingbird or this is a sparrow, this is a crow. Okay, so वो जो चीजें हैं आपकी जो algorithms है that is being designed by a CV engineer. एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मींस ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज है, दिस इज ह्यूमन लैंग्वेज। इन कंप्यूटर्स टर्म नेचुरल लैंग्वेज इज ह्यूमन लैंग्वेज, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी। ठीक है, सो जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें अगर आपका गूगल ट्रांसलेट है जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, या चैट जीपीटी जहाँ पे आप इंग्लिश में अपनी मदर टंग में किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उस टाइप का जो डेटा है टेक्सचुअल डेटा उसको एनालाइज करने के लिए एनएलपी इंजीनियर। तो ये दोनों चीजें एमएल इंजीनियर का ही पार्ट है एंड डेटा साइंस में भी ये चीजें आती है, मतलब। ठीक है, so these six roles that you can see are anyhow related to machine learning. Okay, so moving forward, I think, yeah. So a database administrator, so this role is mostly administrating all of the data। जो भी डेटा हम लोग का क्रिएट हो रहा है वो स्टोर कैसे हो रहा है, सिक्योर है, लोग किसके पास एक्सेस है, कोई डिलीट तो नहीं कर रहा, उसको जो भी अपडेट अपडेट चाहिए, वो पूरा केस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, समवन हु इज अ टीम लीड इन अ लाइक इफ यू आर इन अ बिग कंपनी एंड डेटा एनालिस्ट आपके पास तीन चार है, मल्टीपल प्रोजेक्ट, लाइक एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल पीपल है, तो उसको ओवरव्यू करने के लिए डेटा एनालिटिक्स मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन है, जो कि बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकती है समटाइम्स। सो जॉब रोल हो सकता है सिमिलर हो, बट कभी कभी टाइटल वो डिपेंड करता है आपका कंपनी टू कंपनी। डेटा स्टोरी टेलर इज काइंड ऑफ अ डेटा विजुअलाइजेशन रोल, जहां पे यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द डेटा, लाइक व्हाट द स्टोरी द डेटा इज टेलिंग बेसिकली। तो जो भी हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं, वी हैव टू गिव सर्टेन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, विच इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अ रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, सो कैसे ये चीजें होती है, वी डील विद द सेम। Then big data engineer is there, so it is kind of data engineer का ही एक specialized form है, but it is more into the uh, when we are dealing with big data. So big data is not like literally जो meaning है big data का कि बड़ा data, that is exactly the meaning. So big data is basically when there is a large amount of data. So ये large amount कितना large होता है, इसको हम लोग usually define करते हैं in a way कि जो data एक particular personal computer में accessible नहीं है, that is usually defined as a big data. So इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि 1 TB होगा या 1 GB होगा, बट एक लाइक काइंड ऑफ एस्टिमेट है कि जो एक कंप्यूटर से ज्यादा जिसको लग जाए, दैट इज टर्म्ड एज अ बिग डेटा। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द डेटा फील्ड। सी आई एम गोइंग विद अ पेस कि मुझे ये चीजें कवर करनी है, बट अगर कोई पर्टिकुलर चीज है दैट यू वांट मी टू कवर इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल, अगर कोई चीज में आपको क्वेश्चन या डाउट होता है, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क। आई एम हियर फॉर यू, सो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। If you face anything, if you are feeling that we are missing some point, or if you want a particular thing to be explained in a little bit more detail, just write in the chat box or unmute and ask. Okay, don't shy away. So technical skills for the डेटा फील्ड कैरियर। सो ये जो स्किल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि यही वाली स्किल्स सिर्फ होती है, देयर इज लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लिस्ट। यहाँ पे 100 और स्किल्स लिख सकते हैं हम लोग दैट आर इन द इंडस्ट्री। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सारी स्किल्स क्या हमें सीखनी पड़ेंगी, ये तो बहुत सारी है एंड आप कह रहे हो कि और भी हैं, तो ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन is that we need to master at least 2 to 3 skills in such a way that they complement each other. First of all, let me give you an example. So how this works. So if you are very good in Excel, let's say you are like end-to-end Microsoft Excel, you are very good in business analytics and data analytics, explain more please. Yes, Savi. So don't worry. Like ये जो business analytics and data analytics में बोल रहा हूँ कि we will discuss in a little bit more detail. So वो पूरा job role जो है आपका and जो भी syllabus है, that we would be covering in detail. So just bear with me for a while. हम ये सब छोटी छोटी चीजें एक बार कवर कर लें, फिर मेन फोकस हमारा वो जॉब रोल और वो सिलेबस ही है, एंड देन वी विल लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट Coex also. Okay, so around just give me half an hour, 30 to 40 minutes to wrap the most of things, and उसके बाद आपको अगर कोई मेजर क्वेश्चन होता है, so then you are
फ्री टू आस्क। इन बिटवीन अगर इस पर्टिकुलर में से आपको कोई चीज है जो आपको लेट से आपको पूछना है कि ये हडूप क्या होता है, तो वो आप पिन पॉइंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देन लेट से अगर मुझे सिर्फ एसक्यूएल और डेटा विजुलाइजेशन आता है लेकिन अच्छे से आता है, ओके, सो आई कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, आई कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट। नाउ लेट से ये दोनों चीजें मैंने सीखी एंड देन आई एम आल्सो गुड विद बिजनेस स्ट्रेटजी, सो दिस कैन हेल्प मी बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो 2 to 3 स्किल्स वी नीड टू मास्टर, बट दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लाइक अगर मुझे पाइथन आती है और मैंने मशीन लर्निंग और मैथ्स कर लिया अच्छे से, तो आई कैन बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और अ डेटा साइंटिस्ट। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रोड मैप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी स्किल सीख रहे हो, जैसे कि आपने मशीन लर्निंग सीख ली और आपने एक्सेल सीख लिया। सो यहाँ पे इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग आप एक्सेल में कर नहीं सकते, और मशीन लर्निंग अकेले भी आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फायदा नहीं है ये सिर्फ थ्योरेटिकली सीखने का। ठीक है, so the point here is that you have to follow a particular roadmap that you are following, and you have to make sure that you are going in a much more let's say, जैसे आपका जो रोड मैप है वो आपके जॉब रोल को और आपका जो कैरियर गोल है उसको मैच कर रहा है। ठीक है, आपको स्टार्ट भी एक ऐसे पॉइंट से करना है कि ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट ही मशीन लर्निंग से कर रहे हो एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, यू गेट स्केयर्ड अवे एंड आप वो चीज ही छोड़ देते हो। ठीक है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम सिंपलर मॉड्यूल्स, लाइक पहले आप टूल सीखते हो एक्सेल पावर बीआई, देन यू गो इनटू द प्रोग्रामिंग पार्ट जहां पे आप प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से सीखते हो, देन यू गो इनटू द more advanced part. So Himanshu is asking, so if we opt for business analyst, we will have to learn all the technical skills. So Himanshu, it is not like you will have to learn all the technical skills. जैसे कि मैंने मेंशन किया, यहाँ पे आप 2-3 स्किल्स को आप अपने हिसाब से केटर कर सकते हो कि कौन सी आपको सीखनी है। एंड पाइथन एंड एआई तो वैसे भी आपका पार्ट नहीं है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, बट दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द रोड मैप। ओके, सो नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर टुडे सेशन, जहां पे हम लोग डिफरेंस क्लियरली बिटवीन अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट वी विल डिसाइफर, एंड फिर हम रोड मैप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम आपको सिलेबस या आपको करिकुलम प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, किस पाथ में वो चीजें कवर होती हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर कवरिंग ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक दैट पार्ट विल आंसर like 90% of our questions, and then you are like if you have particular doubts, you are always free to ask. Okay, so DS here means data scientist, DA here means data analyst, and BA here means business analyst. So इन तीनों में differences क्या है? So we'll start with the job role. ठीक है, so job role as in कि when you go into the company, when you are going to the organization, what is the role that you are going to play? ठीक है, so सबसे पहले just try to understand this word here, data analyst. ठीक है, so analyst means कुछ ना कुछ analyze कर रहा होगा, we are analyzing something, and what we are analyzing, that something is data. Okay, so very simple, we are just analyzing the data. Now ये like if you will look at it, है तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट इसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, सो प्रोसेस ऐसे है कि डेटा एनालिस्ट गैदर, क्लीन, एनालाइज, विजुलाइज एंड प्रेजेंट द डेटा। ठीक है, अभी तो हमने बोला एनालाइज द डेटा, तो सीधा एनालाइज क्यों नहीं? बिकॉज अगर डेटा होगा ही नहीं तो आप एनालाइज क्या करोगे, राइट? तो पहले डेटा को गैदर करेंगे। गैदर कैसे करेंगे? लेट्स आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, लेट्स आई एम वर्किंग इन मिंत्रा में काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो मिंत्रा में वी आर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ फैशन, हम कपड़े बेच रहे हैं, लाइक वी आर सेलिंग शूज, वी आर सेलिंग जीन्स, वी आर सेलिंग शर्ट्स, वी आर सेलिंग मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन। ठीक है, सब तरीके के वी आर सेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में सब जगह वी आर सेलिंग। बट लेट्स से माय मैनेजर आस्क्ड मी कि सौरभ, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू एनालाइज द डेटा ऑफ लास्ट ईयर, लाइक द ईयर ऑफ 2023, ऑफ व्हाट शूज वी आर सेलिंग द मोस्ट, एंड हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है शूज मार्केट में। ठीक है, एंड स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर रीजन। ठीक है, तो उसने पॉइंट आउट कर दी 3 चीजें मेरे लिए कि यहाँ पे तो सारा डेटा है, हम लोग तो सब कुछ बेच रहे हैं, सब जगह बेच रहे हैं। उसने मुझे बोला कि 2023 में शूज जो हम लोग बेच रहे हैं स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, ये मार्केट का मुझे एनालाइज करके दो। सो अब यहाँ से मुझे वो डेटा गैदर करना पड़ेगा जो मेरे लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे मिंत्रा के डेटाबेस में हो सकता है सब कुछ मतलब ऑलरेडी यहाँ पर हो, बट आई विल हैव टू फिल्टर आउट द डेटा। ये फिल्ट्रेशन हम लोग यूजली अगर एक डेटाबेस में स्टोर्ड है तो एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, बट ये ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मेजर रोल क्या है डेटा एनालिस्ट का, कि डेटा गैदर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल डेटाबेस है उससे डेटा गैदर किया जो हम लोग के क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब गैदर तो हमने कर लिया, अब उसको क्या करना है, हमें क्लीन करना है। सो वाई दिस क्लीनिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये क्लीन कैसे करेंगे? वॉशिंग पाउडर? नो, नो वॉशिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेट से जब मैंने डेटा गैदर किया तो मैंने कस्टमर्स की एज देखी, जस्ट टू लाइक हैव आइडिया कि जो एज ग्रुप क्या है, क्या यूथ हमारी ज्यादा शूज खरीद रही है, या जो स्पोर्ट्स शूज है वो ज्यादा एज के लोग खरीद रहे हैं, जो भी है मुझे देखना था। सो मैंने देखा कि जो एवरेज एज है वो मेरा आ रहा है 270। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, 270 तो एवरेज एज हो ही नहीं सकता। सो जब मैंने अच्छे से देखा डेटा में, सो मैंने रियलाइज किया कि गलती से एक जगह पे एज कॉलम में किसी ने 2500 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 25। ठीक है, सो उसकी वजह से मेरा एवरेज 270 चला गया। बट अगर ये सिर्फ 25 होता तो लेट से मेरा एवरेज होता 21। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा में कुछ गलती थी. सो टू क्लीन आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू द क्लीनिंग ऑफ द डेटा. यहाँ पे अगर किसी ने कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी, यहाँ पे कोई डेटा में मिसमैच तो नहीं है, डेट तो गलत नहीं है, दिस काइंड ऑफ थिंग. जैसे कि टू गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स से वी आर वर्किंग इन अ एमएनसीज. ठीक है, अब एमएनसीज में वी आर शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब मेरे पास डेटा आया, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे मंथली एनालिसिस करना था. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि एक जगह डेट लिखी हुई है, लेट्स से वी टॉक अबाउट 27 जुलाई. ओके, 27 जुलाई 2023. ठीक है, तो इंडिया में जो लोग थे उन्होंने तो लिखा 27/07/2023. बट यूएसए में क्या होता है कि वो लोग मंथ पहले लिखते हैं. सो उन्होंने लिखा 07/27/2023. अब मैंने यहाँ पे बना दिया फ्लो चार्ट बिना डेटा क्लीन किए, और यहाँ पे आ गया 27th मंथ में इतना सेल था. तो मेरे बॉस ने पूछ लिया कि 27th मंथ कहाँ से आ गया डेटा में. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, उसमें कोई फेक एंट्रीज नहीं है, कोई गलत एंट्रीज नहीं है, कोई डेटा मिसिंग नहीं. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग द डेटा. नाउ वी विल एनालाइज द डेटा. सो एनालाइज आई थिंक वेरी क्लियर है. जो भी हम लेट्स से जो मिंत्रा का शूज का एग्जांपल है, तो हमारा लाइक कितने लोग खरीद रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट द कंपनीज आर सेलिंग, व्हाट ब्रांड्स आर सेलिंग द मोस्ट, जो भी हमारे जनरल क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. नाउ यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा. बट प्रेजेंट से पहले क्या करना है, विजुलाइज करना है. विजुलाइज क्यों करना है? बिकॉज ये जो डेटा हमने एनालाइज किया वो हमारा एक एक्सेल शीट में या जिसमें भी था, तो वहां पे ऐसे ऐसे टेबल था. ठीक है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी. तो ये टेबल तो आप जाके वहां प्रेजेंटेशन में नहीं प्रेजेंट कर सकते कि सर लुक एट दिस टेबल एंड दिस इज ऑल द डेटा, रीड इट थ्रू. ठीक है, सो ये सारे इतने सारे नंबर कोई नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. सो यू हैव टू विजुलाइज द डेटा फर्स्ट. विजुलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी टेलिंग ऑल्सो. ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे let's say you have to showcase them how many, like what brands are selling the most, so you can create a pie chart and you can see this blue circle, so Nike is the most selling one and this green one is the Adidas and ye yellow wala Puma hai. So this is how you can easily give them a better understanding. Instead of telling them कि 2000 शूज प्यूमा के हैं, 1500 इसके हैं, यू कैन जस्ट क्रिएट अ पाई चार्ट एंड उसमें आप उनको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये जो सबसे बड़ा सर्कल है अगर ये नाइकी का है, इट मीन्स कि नाइकी के शूज ज्यादा सेल हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एज अ डेटा एनालिस्ट. वी हैव टू गैदर द डेटा. लेट्स मी चूज येलो. ठीक है, येलो दिखेगा यहाँ पे. गैदर, क्लीन, एनालाइज, देन विजुलाइज एंड देन प्रेजेंट. तो विजुलाइजेशन में मंथली सेल्स कैसे जा रही है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, सो वर्किंग विद द बिजनेस लीडर्स, आइडेंटिफाइंग एंड सोर्सिंग डेटा, व्हिच मींस गैदरिंग. क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा मतलब क्लीनिंग. Analyzing data, analyzing, visualizing and presenting data to in such a way that it tells a compelling story. So story is like you have to make some conclusions out of the data. ठीक है, so story यहाँ पे क्या story है कि नाइकी के शूज ज्यादा बिक रहे हैं और एडिडास के थोड़े कम, प्यूमा के बिक ही नहीं रहे. so यहाँ पे ब्रांडिंग की जरूरत है प्यूमा को. ठीक है, so this is the job role of a data analyst. Till here the job role is clear to each and every one of you. like data analyst का job role क्या है before moving forward to business analyst or data scientist? Okay, I hope it is very much clear. Let's move on to a business analyst now. So analyst what is again here? So this guy also analyzing something. कुछ तो analysis हो रहा है यहाँ पे. क्या analyze कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Analyzing the business. ठीक है. So ये business हम लोग दो तरीके से analyze कर सकते हैं. ठीक है. Okay. Yes. Okay. Great. So when we are moving to a business perspective, business को analyze करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि आप डेटा के थ्रू करो. इफ यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ डेटा नॉलेज. ठीक है, अगर आपको पावर बीआई, टैबलो ये सब चीजें आती हैं, सो समटाइम्स वी टर्म इट एज अ टेक्निकल बीए. ठीक है, सो उस केस में आप डेटा के थ्रू कर सकते हो. एंड इफ यू आर लाइक काइंड ऑफ फंक्शनल बीए जिसको हम बोल देते हैं कभी कभी. ठीक है, उस केस में आप बिना डेटा के एनालिसिस कर सकते हो. तो यहाँ पे डेटा और बिना डेटा के कैसे काम करेगा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. उसके बाद ये पॉइंट्स भी हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, सो सबसे पहले वी विल गो इनटू द फंक्शनल साइड जहाँ पे हम डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं एनालिसिस के लिए. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है. लेट्स से यू गो इनटू अ कॉलेज. ठीक है, नाउ कॉलेज में आप लाइक मैं कंपनी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कॉलेज का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप एक बार उसको समझ लेंगे. ठीक है, सो जब हम कॉलेज में जाते हैं तो पहले हम देखेंगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटरेक्ट किया हमने उनसे, क्वेश्चन पूछे, कैंटीन में जाके खाना खाया तो हमने देखा खाना अच्छा नहीं, वट एवर थिंग्स वी हैव. ठीक है, तो वहां पे हमने कुछ अपना फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जितनी हमें चीजें पता है उसके हिसाब से हमने कुछ रिकमेंडेशन या कुछ एनालिसिस किया ऑफ द कॉलेज. ठीक है, यहाँ पे अभी वो कॉलेज को हम लोग बिजनेस समझ लेते हैं. ठीक है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है. तो वो हो गया एक फंक्शनल बीए का पार्ट. जो भी हमें नॉलेज है, जो भी हमें कम्युनिकेशन की, हमने लोगों से बात की, खाना वाना टेस्ट किया कैंटीन का, जो भी है, तो हमने वो एनालिसिस किया विदाउट डेटा. ठीक है, यहाँ पे डेटा का कोई यूज नहीं किया हमने अभी तक. सो दैट इज काइंड ऑफ अ फंक्शनल बीए रोल इन वेरी वेग टर्म्स. ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें और भी होती है लाइक इंटरेक्शन, टीम वर्क, प्लानिंग व्लानिंग जो भी है, बट यहाँ पे डेटा का यूज नहीं किया हमने. जहाँ पे डेटा का यूसेज आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेंगे. कैसे? अभी तक हमने जो भी हमने बातचीत की वो तो हो गई हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन, बट डेटा में हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट कितना, एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
ठीक है। सो मे बी हो सकता है कि हम पर्टिकुलर कैंटीन में गए और उस दिन लेट्स से एंड उस पर्टिकुलर डे पर द फूड वाज नॉट दैट गुड, सो हमारा कंक्लूजन आ गया कि फूड अच्छा नहीं है यहाँ पे। बट इफ वी विल लुक इनटू द डेटा इट विल टेल यू इट मे टेल यू अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है डिफरेंट स्टोरी ही बताए, बट वी विल सी कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द फूड एंड 30% आर नॉट सेटिस्फाइड, मे बी बिकॉज यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन, तो आपको फूड पसंद नहीं आया, बट इफ यू विल look through the data you will see कि food अच्छा है यहाँ पे, so instead of changing the food you will see कि we can continue with the same, ठीक है। तो those kind of decisions when you are making based on the conclusions that are derived from any kind of data then you are a kind of a technical data analyst, and जहाँ पे आप जो आपका यूजुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो भी आपका स्टेक होल्डर से बात करना, टीम वर्क, और जो भी आपका ऑन फील्ड हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, उसके बेसिस पर जो एनालिसिस दैट इज मोर ऑफ अ रोल ऑफ फंक्शनल बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। बट एनालाइज क्या करना है यहाँ पे, दोनों में बिजनेस को ही एनालाइज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट से थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि ये पर्सन अगर हमारा एक बिजनेस एनालिस्ट है, सो दिस बीए गाय इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स टू दिस गाइस, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो लोग हम लोग समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर्स, क्लाइंट, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, दीज आर नॉट एक्सपर्ट इन डेटा, इन लोगों को चीजें यूज करनी नहीं आती। तो ये विजुअलाइजेशन भी समटाइम्स यू विल हैव टू मेक बाय योरसेल्फ। देन जो आप विजुअलाइजेशंस बनाओगे यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटिंग देम इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये डेटा है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये डेटा हमारा मंथली सेल्स का है, सो जनवरी वी डिड गुड, फरवरी वी डिड एक्सीलेंट, बट मार्च में डाउनफॉल है, तो ये डाउनफॉल क्यों है, ये इंप्रूव कैसे हो सकता है, ठीक है। These kind of questions as a business analyst you have to ask yourself, you have to give answers to these questions to your clients, and you have to give recommendations also, ठीक है। So job role of a business analyst here is to evaluate a company's functions and IT structures, so जो भी functions वहां पर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हम लोग फाइनेंस में तो फाइनेंस में, दोज काइंड ऑफ फंक्शंस जो कंपनी के जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एनालाइज करके इवेल्युएट करना, उसके बेसिस पर प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, लाइक जो भी हम लोग का क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, कोई डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है, उसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, टीम जो डैशबोर्ड बना रही है वो रेलेवेंट है कि नहीं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू ओवरव्यू। समटाइम्स you have to make the dashboard yourself if you are if you are good in Power BI and Tableau, you have to make it yourself and you have to present it obviously, so presenting findings and recommendations and creating visuals and financial model, तो यहाँ पे आपके लिए, एंड ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ स्टाफ, दिस इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ थिंग जो कि आपको यूजुअली एज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर आप मैनेजरियल रोल पे हो तो Sir, I have a doubt over here. Like, this is a very critical role because as a fresher, you're analyzing and then you're reviewing and you're also giving suggestions for improvement of such a big company. So, how is it possible for anybody joining new in this role to do such a challenging thing? Because giving the data, explaining, reviewing to client is something different, and then after reviewing you are identifying the areas for improvement that also needs to be done by us. Then we are also present we are also presenting the findings and recommendations to management, like what can we improve in this business. How is it possible for any common person to uh, improve, like Okay, I as a understand. I fresher? Yeah, really understand. so So you're as a getting my fresher, point, like you right? are saying, if this is very critical role where you have to directly give the recommendations and you are a fresher, you get like you did anything wrong, then like how can company rely on you, right? So the thing is that you Yes, won't directly yes. get into the site where let's say this is Bill Gates and you are in Microsoft, so you will directly give uh, as a business analyst give recommendations to him. So whenever you are in a, let's say in a big company, there are multiple projects. So there are multiple managers assigned to those projects, and then there are team leads assigned. So you might be in a particular team where your team is working on a particular product which is part of the big project that is part of a big company. So in this particular product you are analyzing and you are giving your like insights to a client or your manager or your team lead, then he's conveying those insights and all multiple insights to his manager. So there is a criteria that you are following. It is not like you are a fresher business analyst and you are directly like giving these key findings to your like the shareholder or directly to your MD, right? There is a procedure that you have to follow in most of the institutions. So as a business analyst, you have to present findings, you have to give recommendations, but you to your superior. So in that case, there is a structure that they follow. It's not like if you will tell them that we are not doing good in March, so we should close our shop in March. So they will say, okay, business analyst is saying close the shop in March, they will do it. No, obviously not. Okay. So there is a team that is working. All of those are giving their own recommendations. Then they get to a let's say a conclusion that this can be done, then they will ask their financial department or their other team leads like if they can do this, if they have the budget to do this, and all those planning will happen.
then some step will be taken. Okay, so it is But kind of sir, a process again, that we have. even if we have to give all this data to our senior, we need to have good knowledge on the market, brands, their sales, and everything we need to observe along with the part of the role we are doing. Yes, obviously. So it is a very important role, irrespective of at what level you are. So what is uh like what how can we prepare ourselves to fit in this role? Like what kind of First of simultaneous all, actions or steps needs to be done to yes, first move? of all, you have to be very much great with the tools if you are like working with the data team. Okay, so in this point, this data 5739, whatever this is, you should make sure that this data is correct. It shouldn't be wrong in any case, and you should be able to communicate it efficiently. So communication is very important. Okay, half of the things matter on your communication and confidence. If you are not confident about your own dashboard, you like people will think that you have like this recommendation might not hold that much strength. Okay, so communication is very important. You have to be very much precise with your documentation, whatever you are writing, whatever the functions the client is telling. Attention to detail is also very important. So it is not something that freshers cannot achieve, or it is very critical. You are, to be honest, you are not in a medical or a nuclear scientist profession that a lot of lives are directly at the stake, but not saying that business are not uh, working for something critical. So depending upon your domain, it could be very important. You have to be very much aware about yourself, and like that is the demand of the market, right? You will have to work hard, you will have to pay attention to detail, you will have to have good communication. These are the basic things that you are supposed to have anyways, even if you're not a business analyst. So I how hope that does this answers your work? question. Like Amazon will come to like any company and they will have or they will ask to or they will ask the last 5 years business records in e-commerce something. How are we going to compare with Myntra, Nykaa or any other platforms? What kind of data we are providing to Amazon in that case? And how do we evaluate everything? Okay, I actually don't get your question very clearly. You are saying that how the particular business analysis of someone from Amazon that is a multinational company will compare to that of a Mintra kind of company? Yeah, like who will be a client? Like, say, for example, Amazon is the client. Then what kind of task are they going to give us? Like, what kind of data they want from us? See, it And depends from company to company. So Amazon as a company is very large. It is like Myntra and Flipkart. Like Myntra is owned by Flipkart, so they're having offices in India. Amazon is having offices all over the world. So in different countries, they will have different people that will help them analyze. Okay, in these countries the sales is high, and where are we lacking? And then they will have particular products. So if Amazon is listing, let's say each and every product on their what we can say on their website, and Flipkart is also not taking Myntra, but Flipkart, that is a direct rival of Amazon in India. So let's say in India, Flipkart is like selling all of the mobile phones, and Amazon is selling everything good, but they are not able to sell any mobile phones. So this particular branch is not giving any profit. So either work on it or shut it down. So in that particular big umbrella of Amazon, which is all over the world, and then a smaller umbrella of India, and then even smaller umbrella of mobile phone, this particular department also matters, because at the end of the day it is giving profit to this bigger umbrella, right? So depending upon, like in a smaller fraction also, these large scale companies are also very prominent in making sure that even the smaller functions, or even the smaller roles that they have, let's say in India mobile phones, in let's say Brazil sports shoes, so different kind of things could be there. So they make sure even these smaller people at smaller scale are very much equipped with what they are doing, so that they can like generate good outcomes out of this. So Amazon directly, Jeff Bezos is not seeing how many mobile phones they are selling in, let's say, Delhi NCR region. There are people sitting beyond them and beyond them and beyond them who are doing these kind of things, right? So that is how they compete with each other, not directly on a global level maybe, but obviously in India, Flipkart will compete with Amazon heads on heads, right? Because Flipkart is a dominant force in India at least. So I hope that answers your question, like that, right? yeah, Okay. kind of. In Yeah, in the end of the got session, it. if you still have any more like any intrinsic thing that you want to ask, like feel free to ask. But as of now, let's just complete this thing, and then I will surely take anything else that you want to do. Okay. So yeah, thank you, Sneha, for the questions. It was like well thought of. So now I think data analyst and business analyst is clear to everyone. Like what are the distinctions and what are the things that are common between them? Savi saying basically how do we gather the data and how much? It depends on your client, how you will gather the data. He will tell you that there is the data stored and this is the data that you need. Sometimes the database admin will do it for you. Sometimes you will have to do it yourself. So kind of depends from company to company.
domain to domain. I'm coming from non-tech background. Am I eligible for this course is what others is asking. So I'll answer this question in the roadmap part. Okay. But just to give you an overview, so if you are from a non-tech background, you are eligible for all the three courses depending upon your interest. It might be easier for you to get into a business analyst role if you are from a MBA, BBA, BCom background compared to a data scientist role, but it is not a hardcore rule that you have to go for a business analyst role. If you as a management background want to become a data scientist, you can go. You will have to work a little bit harder, obviously. And if you are from tech, you want to go to a business analyst role, it is you can go. So tech people can go into any roles. Same for non-IT people, but business analyst is let's say easier path for them to walk as compared to data scientist. But I will not demotivate you. Data scientist is a very interesting field if you are willing to learn the programming part and the mathematical part. Very good scope and very interesting also. Okay, not boring also. Even business is How very to gather data, sir? Like, do we have any specific mode of, will we be provided by the company any source Yes, where we yes. can collect So data, or it's it just random our? depends. It depends. So if in 90% of the cases, your client will provide you with the data that he wants you to analyze. Maybe in some research kind of thing, when you are in a startup and they're trying to like make a new product, you will have to gather some data from public sources or something. But in 90% cases, when you're working for a client directly, they will provide you with their data. But there would be restriction that you cannot share this, you cannot insert a pen drive in the laptop and copy the data. All those things would be there. But in most of the cases, you will get the data. But sometimes it is from the central repository, and as I've mentioned, you have to like filter out the data that is relevant for your analysis. Not every data you need. Right? So moving on to the role of a data scientist, it is kind of a technical role, and the science word here specifically means that it might be a little bit more serious role. So let's see what is the big like what is the first about here. So if you look closely, gathering and preparing data is something that data analyst can do, nothing special. Using various type of analytical tools, data analyst can do nothing special. Data visualizations, also data analyst can do nothing special. But this third point here is the most important point. As a data scientist, so we will just discuss like focus more on this kind of point here. So this point here states developing statistical and predictive models. Now, what is a predictive model? Some model that will make future prediction. Okay. Now, how this model will make future prediction? Will it go like it will use a time machine, go into the future, come back and tell me the truth? No, it will use data sets. So I'll give you an example. So let's get the like the usual method that I try is the agriculture and rain example. Yeah, sorry for the mispronunciation. So let's say and this is the agricultural department in Maharashtra, the state of Maharashtra, and they want to see how much rainfall would be there in the next year so that they can plan the irrigation and all those things, what crop they need to do and all those things accordingly, right? So they come to a team of data scientists they hire or they like give the contract to a company and they ask them like what is the prediction for the rain for the next year. So what the data scientists will do, they have the data for past 30 years. Okay, so that data will include everything, right? So in the last 30 years, what the temperature was, what was the atmospheric pressure, what was the wind speed, and all those data is there, and then the final rainfall for each and every year of each and every month is there stored. Okay, so using this data, we will create a model, and when we will give it all these values, it will give us the prediction for rainfall. So let's say the prediction for rainfall is around 100 to 120. Okay, so that is something that can be expected. Okay, so it is not like it will give you a exact prediction that 101.25 would be there. It will give you a range of prediction. Like we are assuming that it should be between 100 to 120 depending upon a few factors. And if this is good, then it will help you to like get a better advantage. Similarly, in cases of image, there is a lot of things. So let's say we have a lot of X-rays with us. Okay? So we have a lot of X-ray images, and the thing is that even the best of the doctor in his life would have seen let's say maybe 10,000 एक्सरे images, but उससे ज्यादा तो नहीं देखी होंगी, ठीक है, एक्सरे की जो इमेजेस है. बट एक मशीन को आप कितनी भी इमेज दे सकते हो. लेट्स से ये एक्सरे की इमेजेस है, इसमें फ्रैक्चर हमें बताना था बस, ठीक है, फ्रैक्चर बताना था. सो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से ओवरऑल वर्ल्ड में लाइक आई हैव 10 लाख इमेजेस, ठीक है, 10 लाख इमेजेस. एंड ये इमेजेस डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं देख पाएगा. सो मैं क्या करता हूँ, मशीन को देता हूँ, एंड ये 10 लाख इमेजेस मेरे पास पहले से मतलब डॉक्टर्स ने किया हुआ है कि इसमें फ्रैक्चर था, इसमें नहीं था, ठीक है. तो मैं मशीन को इमेजेस देता हूँ और बता देता हूँ कि फ्रैक्चर था या नहीं था. इस पर एक मॉडल ट्रेन होता है और वो मॉडल इन फ्यूचर मुझे प्रिडिक्शन बता सकता है. वो प्रिडिक्शन क्या बताएगा कि जब मैं एक मशीन को लाइक जब मैं इस मॉडल को एक एक्सरे की इमेज दूंगा तो वो बता देगा कि फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है. सो इसको मैं बल्क में इमेजेस देके एक मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ ना. ऑब्वियसली डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है, बट यहाँ पे हम लोग
without like using any human intervention we can get the prediction. ठीक है, सिमिलरली हम लोग का जो जीमेल में स्पैम आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो डेटा साइंटिस्ट के अराउंड ही मूव करती है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका डेटा एक टेबल में ही होगा। जैसे डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट में 99.9% आपका डेटा जो स्टोर्ड होगा वो एक टेबल में ही होगा, आपके बैंक का डेटा, आपके मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, सेल्स का, अटेंडेंस का। बट डेटा साइंटिस्ट में देयर इज अ डिस्टिंक्शन कि वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट जैसे कि पैराग्राफ या फिर एक आर्टिकल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो आई थिंक द जॉब रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज क्लियर। सो यहाँ तक हमने अभी तक रोड मैप और टूल्स डिस्कस नहीं किए, बट जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि यहाँ पे इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट योर जॉब रोल इज, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर before we proceed with the roadmap? Okay, great. So first of all, to start with the roadmap of a data analyst. Okay, so roadmap of a data analyst would be starting with requirement analysis. Then we will go into Excel. Okay, then we will go into SQL, Power BI. So what is this thing? I'll just explain you. So first of all, starting with the requirement analysis is like a basic introduction where you have to, we will give you a theoretical understanding in a particular session of how to gather the requirement. Salman is asking, I'm from a non-technical background. Can I become a data scientist? Yes, Salman, you can, but you will have to learn mathematics and all those things, right? So you have to maybe give a little bit more time and hard work to become it. But it is not a strict distinction that you have to have a like BTech or something to become a data scientist. Still, there is no, but maybe in near future, in 2 to 3 years, when it gets a lot more compacted, there could be. So the early you move, the better for you. So requirement analysis is there where we are just understanding how to gather the documentation and the requirement from a client. Then Excel is there. So Excel is I think everyone knows what Excel is. No need to explain. But still, Microsoft Excel, the famous software for spreadsheets. Okay, it has been there since the 90s. जब हमारे पास Python, Tableau कुछ भी नहीं था, Power BI ये सब, तब भी हमारे पास Microsoft Excel था. So for a good 2 decades, जो भी हमारा फाइनेंशियल डेटा, जो भी हमारा जो जितना भी डेटा एनालिटिक्स जो भी था, सब कुछ एक्सेल पर ही डिपेंडेंट था. एंड इवन नाउ इट इज वेरी मच यूज्ड इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री. फाइनेंशियल मार्केट में MIS में इट इज स्टिल द लीडिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि ये सब चीजें आ गई तो एक्सेल इज इररिलेवेंट. इट इज स्टिल वेरी मच. Is this good career for commerce background? Yes, Devendra, it is very good for all of the background, but commerce के लिए specifically business analytics is much more relevant. ठीक है, so SQL is something, it is a query language, so structured query language. So not a programming language. Q here stands for query. So whenever we are gathering the data, we have to write a query. When we are creating a data, we have to write a query. तो ये query कैसे लिखते हैं, database management, ये database होता क्या है, ये सब चीजें हम लोग इस मॉड्यूल में कवर कर रहे होंगे. So SQL is somehow related to database management, DBMS अगर आपने सुना हो, बट ये क्या रिलेशन है, क्या कैसे काम करता है in the course. Then Power BI and Tableau are there, which are very famous data visualization tools. So data vis, okay. So this here stands for visualization, जो भी हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विजुलाइजेशंस में यूज होते हैं. These are also called BI tools. ठीक है, BI stands for business intelligence. तो यहाँ पे काफी सारी एडिशनल फीचर्स हैं. आप डेटा ट्रांसफॉर्म, डेटा क्लीन कर सकते हो. ठीक है, आप एनालिसिस भी कर सकते हो एंड आप एट द एंड प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो यहाँ पे. ठीक है, Power BI is by Microsoft, Tableau is by Salesforce. So we cover both the tools. Power BI is highest in demand, like 50% से ज्यादा मार्केट शेयर Power BI का ही है. बट जो कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में नहीं काम करती, जो Salesforce के ERP में काम करती हैं, दे आर much more into the Tableau kind of thing. इसके अलावा भी there are like a little bit more tools like Looker and Cognos Analytics. So और भी कुछ कुछ कंपनीज के IBM वगैरह के हैं खुद के tools in BI because it is a very growing industry. बट दे आर लाइक हैविंग लाइक 2 to 3% मार्केट शेयर प्रोबेबली, और वो कोई अलग से सीखता भी नहीं है, वो कंपनीज मोस्टली खुद ही सिखाती हैं व्हेन दे आर हायरिंग. बट पावर बीआई एंड टैबलू आर वेरी लाइक इन अ लॉट ऑफ डिमांड. एंड अगर पावर बीआई आप बहुत ही एक्सपर्ट लाइक कर लेते हो सिर्फ पावर बीआई अच्छे से एंड समवट एसक्यूएल, यू कैन स्टिल गेट अ जॉब रोल एज अ पावर बीआई डेवलपर. Then EDA analysis is kind of a exploratory data analysis. So DA तो data analysis ही है हमारा, but E stands for exploratory. So what is exploratory? We are exploring. So what are we exploring? जब भी हमारे पास डेटा आता है, so we are trying to decipher कि एवरेज वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, all those kind of things, right? So that is kind of part of a EDA. तो ये EDA हम लोग पावर बीआई में एक प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे एंड EDA we will do in Python also with our project. ठीक है. Now there is ChatGPT. So you will teach you how to increase your productivity using ChatGPT. ठीक है, so कैसे आपको ChatGPT से communicate करके you can write Excel formulas, you can write, like ask to write SQL queries, to write DAX formulas in Power BI, to write Python code. ऐसा नहीं कि ChatGPT आपका सारा काम कर देगा, but you can like very much increase your speed of working and you can also increase your efficiency. अगर आपके कोड में कोई एरर आ रहा है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हो, अगर आप यहाँ पे कुछ गलती हो रही है तो वो चीज़ पूछ सकते हो. ठीक है, then
Azure fundamental is there, which is a cloud platform. तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग क्लाउड सिखाएंगे यहाँ पे. यू आर नॉट अ क्लाउड इंजीनियर, यू आर अ डेटा एनालिस्ट. वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ द क्लाउड. ठीक है, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड में डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती है, जस्ट सो यू हैव एन आइडिया व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ कंपनी. बिकॉज नाउअडेज कंपनीज एक्सपेक्ट यू टू नो एटलीस्ट द बेसिक्स. Then GitHub, we will discuss in last part of the slides also, but it is nothing but a kind of a virtual portfolio website, if I can say it like that. So वैसे तो GitHub बहुत डिटेल चीज है जहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, टीम्स बना सकते हो. बट अगर आप एक डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव से देखो तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो. एंड जो भी आप इसको जिसको भी आप ये GitHub का लिंक शेयर करते हो या अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो, सो एनीवन कैन विजिट योर GitHub प्रोफाइल. एंड आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, एक्सेल पर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, कुछ आपने कोड लिखा है, वो देख सकते हैं, वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड टू हैव थिंग एंड यू शुड ऑलवेज मेंशन इट इन योर रिज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल. ठीक है. देन देयर इज स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज आई थिंक यू ऑलरेडी नो इन योर स्कूल. आपने बेसिक मीन मीडियन मोड पढ़ा होता है. वी विल कवर अ फ्यू मोर थिंग्स लाइक पी वैल्यूज, एट स्कोर, नॉर्मलाइजेशन, थोड़ी बहुत एडिशनल टॉपिक्स है. बट ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेन लेके यहाँ पे सॉल्व करनी है चीजें. वो सब चीजें पाइथन में हो जाएगी. हाउ वी टीच यू. ओके, सो वी विल इम्प्लीमेंट स्टैटिस्टिकल थिंग्स यूजिंग पाइथन. ठीक है. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, मीन हम लोग एवरेज वैल्यू को बोलते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पूरा डेटा है वो आपको बैठ के ऐड कर रहे हो एंड डिवाइड कर रहे हो. यू विल जस्ट यूज अ फंक्शन लाइक लेट्स से वो हम लोग का एज कॉलम में है, सो एज डॉट मीन करके हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, और ये वैल्यू हम लोग की यहाँ पे आ जाती है. ठीक है. सो हाउ टू डू दिस, कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, और कौन सी चीजें यहाँ पे, वो हम लोग स्टैट्स एंड पाइथन में कवर करेंगे इन डिटेल. And then machine learning algorithm, we will give you a basic introduction. So if you are willing to go into machine learning in your future like endeavors, अगर आप आगे जाके data science या machine learning में जाना चाहते हो, you can do. But यहाँ पे we will just give you an introduction, like what is machine learning, what are the different types of machine learning, and like one or two few algorithms की ये काम कैसे करता है. ठीक है, so that in case in future you can go. Then roadmap of a data scientist, it is I hope I'm not going very fast, but if you want me to explain particular thing in very like a little bit more detail, just feel free to ask. Okay, so this roadmap till here is the exact replica of the data analyst roadmap. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा. हम लोग वही सारी चीजें सीख रहे होंगे जो हम लोग डेटा एनालिस्ट में सीख रहे थे. बट पाइथन के बाद यहाँ पे एक मेजर डिस्टिंक्शन आता है. दिस होल थिंग दैट वी कॉल एज अ, हम लोग का जो मेजर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का पार्ट है. सो बिफोर मशीन लर्निंग वी स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम लोग लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड डिफरेंशिएशन कवर करते हैं. अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के वो ग्राफ बनाना है, फिर वो एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं. बस आपको समझ होनी चाहिए कि एक ग्राफ क्या होता है, लाइन क्या होती है, ये सब चीज़ों की. अगर यू हैव अंडरस्टैंडिंग यू कैन अप्लाई देम यूजिंग पाइथन. Someone is writing in the chat box. No, sir, completely fine. Okay, good. Then machine learning advanced, artificial intelligence and deep learning. So we will be covering all these things. तो machine learning में कौन सी algorithm है, artificial intelligence क्या होता है, deep learning में कौन सी algorithm है, these things we will cover in a lot more detail. Just to give you an idea, so if you will consider this big circle as AI, artificial intelligence, anything that can mimic human behavior, इसके अंदर हम लोग का एक पार्ट होता है machine learning. ठीक है, machine learning is a part of AI. Then उसके अंदर एक छोटा सा और पार्ट होता है deep learning. ठीक है. सो डीप लर्निंग में कौन सी एल्गोरिदम आती है, मशीन लर्निंग में कौन सी एल्गोरिदम आती है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यहाँ पे हाउ दे आर सेम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और डेटा साइंस में कितना आपको करना है, दो थिंग वी विल कवर. तो मशीन लर्निंग की सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स एंड डीप लर्निंग की सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स. मशीन लर्निंग इज बेसिकली मशीन को बिना कोड किए हम लोग डेटा से, जो हम मैंने बोला ना डेटा देंगे और ट्रेन करके कुछ आउटपुट देगा मॉडल, तो वो मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल ही होता है. ठीक है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ही यूज हो रहा होता है, स्टैटिस्टिक्स और मैथ. ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कुछ जादू टोना हो रहा है, साइंस फिक्शन हो रहा है, नहीं. मैथ्स के बेसिस पर ही वो पूरा मॉडल बनता है जो एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन देता है डिपेंडिंग अपॉन कि पहले कैसा डेटा मूव किया था. ठीक है, सो लेट्स से अगर स्टॉक ऐसे जा रहा है, तो इसी ग्राफ को हम लोग बस थोड़ा सा मैथ्स लगा के कंटिन्यू कर देते हैं कि आगे जाके चांसेस है कि इतने से इतने के बीच में रहेगा. बट एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं. सो दैट वी विल कवर. नाउ मूविंग ऑन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अगेन जैसे मैंने बताया था, जब हम लोग टेक्सचुअल डेटा में डील कर रहे हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, हम लोग का चैट जीपीटी हो गया, देन वी आर फोकसिंग ऑन नेचुरल लैंग्वेज. सो डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड प्रोसेस वी हैव टू डू फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. देन जनरेटिव एआई इज समथिंग दैट इज जनरेटिंग एंड नॉट जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. ठीक है, ये मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बट मैं बता देता हूँ तब भी. तो जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, आई विल गिव यू जस्ट एन सिंपल एग्जांपल. जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है, तो अगर आप गूगल में लिखते हो कि मुझे ऐसे ऐसे राइटिंग के लिए आपको ऐसे चाहिए ऑन, लेट्स से
महात्मा गांधी के ऊपर आपको ऐसे चाहिए, ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिख लो, महात्मा गांधी के बारे में ऐसे चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करोगे, इट विल फाइंड द लिंक जो लोगों ने लिख रखा है, वो आपको लिंक दे देगा, लेट्स से विकिपीडिया या कुछ भी, आप लिंक पे जाके देख सकते हो। बट उस लिंक पे किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो, ठीक है, जनरेट नहीं किया गूगल ने, बस आपको लिंक दे दिया कि इस लिंक पर लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ लो, या ये न्यूज आर्टिकल है, इस पर जाके आप पढ़ लो। बट चैट जीपीटी क्या करता है, या कोई भी जनरेटिव एआई मॉडल, वो आपके लिए खुद से बैठ के ऐसे लिखता है, ठीक है। जैसे आप गूगल पर कोई इमेज सर्च करते हो, इमेज ऑफ अ बर्ड, वो आपको जो किसी ने खींच के अपलोड कर रखी होगी इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, वो आपको दे देगा। बट ChatGPT will try to create some image of its own. So if you will ask ChatGPT to create a hypothetical image, let's say you ask him to paint a red fort in blue color and train passing through red fort. So वो गूगल तो नहीं बना पाएगा क्योंकि वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, बट ChatGPT will try to like make something like red fort और उसमें कुछ पट्टी वट्टी बना के it will try to create something. So that is example of a generative AI, where it is trying to generate something, ठीक है। So that is there. Then there is time series modeling and TensorFlow. So time series modeling again when the data is time dependent, जब भी हमारा यहाँ पे स्टॉक प्राइस है और लेट्स से टाइम है, तो जहाँ पे भी टाइम हम लोग का होगा किसी एक एक्सिस पे, वहां पे टाइम सीरीज मॉडलिंग वाली एल्गोरिथम विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वंस, ठीक है। तो ये कवर करेंगे। एंड टेंसरफ्लो इज नथिंग बता लाइब्रेरी इन पाइथन, तो ये लाइब्रेरी कवर करेंगे इन डिटेल कि पाइथन में लाइब्रेरी कैसे है, कैसे काम करती है। एंड टेंसरफ्लो इज बाय गूगल, ठीक है। सो डीप लर्निंग वगैरह में इट इज वेरी मच यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग मॉडल्स एंड ऑल दोस थिंग। सो डोंट गो लाइक लॉट मोर डिटेल अभी स्टार्टिंग में ही, जब तक आप लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर डोंट जंप इनटू द मैथ्स पार्ट स्टार्टिंग में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट विद सिंपलर थिंग्स लाइक एक्सेल वगैरह आप सीख पाओ, पहले कोडिंग सीख लो, देन यू जंप ऑन टू मैथमेटिकल थिंग्स, राइट। मूविंग ऑन टू बिजनेस एनालिस्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू दिस इज सेम एज डेटा एनालिस्ट, बट यहाँ पर पाइथन आपका मिसिंग है। सो पाइथन, वेयर इज पाइथन, कैन नॉट फाइंड इट है। सो पाइथन विल बी ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स परसुइंग बिजनेस एनालिस्ट कोर्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अगर आप पाइथन करना चाहते हो तो आपको फ्री लाइक विद जो भी आप फीस बिजनेस एनालिस्ट के लिए भर रहे हो सेम फीस में मिलेगा, नो एडिशनल चार्जेस। इफ यू वांट टू स्किप पाइथन यू कैन स्किप पाइथन बिकॉज इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। सो गुड टू हैव स्किल है पाइथन, अगर आप करना चाहते हो वी विल मोटिवेट यू टू डू इट। आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, उसका सारा सपोर्ट आपको मिलेगा उसमें एज अ लाइक जो आपको डेटा एनालिस्ट में मिलता है। बट इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप पाइथन, ठीक है। पाइथन के लिए कोई एडिशनल फीस या कोई चार्जेस नहीं है, सेम फीस में ही आपका कवर होगा। देन आफ्टर दिस स्टैट्स थिंग देयर वुड बी बिजनेस प्रोसेस, एसडीएलसी, एजाइल, जीरा, स्क्रम, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, बिजनेस प्रोसेस लाइक जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, एफआरडी, फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये लिखने का फॉर्मेट वगैरह, हाउ टू मेक श्योर यू आर राइटिंग इन अ गुड वे, प्रिसाइज वे। देन एसडीएलसी इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सो व्हेनेवर यू हैव अ क्लाइंट प्रोजेक्ट, आप कोई डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो आप फॉलो करते हो। पहले आप रिक्वायरमेंट लोगे, फिर आपका डेवलपर्स के पास जाएगा, फिर वो टेस्टर्स के पास जाएगा, फिर वो डिप्लॉय होगा, यूजर्स के पास जाएगा, फिर यूजर कुछ फीडबैक देंगे, फिर से डेवलपर के पास जाएगा, फिर वो चेंजेस करेंगे, फिर ये ऐसे लूप में चलता रहेगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। ऐसी वाटरफॉल होता है जहाँ पे लूप नहीं चलता, बस हम लोग ने रिक्वायरमेंट ली, हम लोग ने डेवलप किया, हम लोग ने लॉन्च कर दिया, काम खत्म, ठीक है। सो एजाइल में अपडेट आते रहते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह के आते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, यहाँ पे आई एम नॉट हियर टू टीच यू ऑल दो स्किल्स, दिस वर लाइक दिस वुड बी कवर इन लॉट मोर डिटेल कि वाटरफॉल का इंडस्ट्री में क्या यूसेज है, एजाइल कब यूज करना है, देन एजाइल के पार्ट है स्क्रम एंड कॉन, एंड यहाँ पे जीरा यूज होता है ये सारा कुछ प्रोसेस को मैप करने के लिए। सो जीरा इज अ काइंड ऑफ अ टूल और सॉफ्टवेयर। जीरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपके पूरी टीम काम कर रही होती है लॉग इन करके। तो वहाँ पे आपका पूरा एक प्रोसेस का रिव्यू रहता है, क्या क्या काम हो गया है, क्या बैकलॉग क्या है, इन प्रोसेस क्या है, फ्यूचर में क्या पेंडिंग है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ये पूरा यहाँ पे कैसे जीरा डैशबोर्ड होता है, जीरा का यूसेज क्या है, एजाइल से कैसे रिलेटेड है, स्क्रम एंड कॉनबॉन में क्या सिमिलरिटीज, क्या डिफरेंसेस है, ये सब चीज यहाँ पे इन डिटेल कवर होगी एंड अलॉन्ग विद द केस स्टडीज। सावी हैज रेज्ड हर हैंड, ओके और सावी। आपने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी हमारा रोल रहेगा बिजनेस एनालिटिक्स करने में? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका रोल नहीं है। डेवलपमेंट के लिए आपके पास ऑब्वियसली डेव्स होते हैं जो वहाँ पे कोड करते हैं, जो पूरा डेवलपमेंट करते हैं, बट यू हैव टू काइंड ऑफ ओवरव्यू व्हाट द प्रोसेस इज, ठीक है। सो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना आपका काम है, ठीक है। डेवलपर को बिजनेस नहीं पता और क्लाइंट को डेवलपमेंट कैसे होती है ये नहीं पता, ठीक है। बट ये दोनों आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप बीच में एक चेन ऑफ कमांड हो, जो आप क्लाइंट से पहले रिक्वायरमेंट लेते हो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि व्हाट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई ऐप होगा तो उसमें बटन यहाँ पे होना चाहिए, इतने यूजर साइन अप कर लेने चाहिए, पासवर्ड के ये रूल्स होंगे, जो भी वो बताएगा वो आपको डेव को कम्युनिकेट करने हैं। और फिर डेव जो आपको बताता है कि ये बनाने में इतना टाइम लगेगा, इतने फीचर्स लगेंगे, इतना क्लाउड स्टोरेज लगेगा, वो आपको फिर क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको हैंडल करना है। फिर में आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसमें कितनी चीजें हो गई हैं, कितनी चीजें पेंडिंग है, कितना टाइम है, एक्सेट्रा बहुत सारी लाइक टेक्नोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज होती है इसमें, लाइक स्क्रम में स्क्रम कॉल, स्टोरी पॉइंट, ये सब चीजें।
ठीक है। सो ये सब चीजें यहाँ पे कवर होंगी कि पूरा प्रोसेस कैसे आपको मैप करना है। डेवलपमेंट सर इज नॉट आपने ए तो रोल। बहुत सिंपली बता दिया, बट मेरे दिमाग में एक ही चीज कब से घूम रही है कि ओके। ये तो सिर्फ एक जॉब रोल है। आपने एक प्रोसेस बताया कि बिजनेस इनका जॉब का रोल क्या रहता है, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, या फिर कंपनी हमारा और हमारा रोल कंपनी में कैसे रहता है। बट मैं तो यस। ये सोच रही हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी क्या नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब आप सी जैसे क्लाइंट जस्ट है टू तो स्टॉप अभी यू देयर, तो क्लाइंट यहाँ कुछ पे हमसे जो मांग रहा है आपके तो पास नॉलेज होना चाहिए ना, वो यही है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एसडीएलसी में, ये एजाइल में होता क्या है। सो ये जो प्रोसेस आप मैंने आपको रोल बताया ना, ये पूरा काम कैसे करता है, कैसे एग्जांपल्स इसके क्या होते हैं, ये पूरा यहाँ पे जीरा में ही काम होता है कंपनी में। ठीक है, अगर आप हो तो आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जीरा में करना है। तो जीरा में कैसे करोगे, डेट वी विल टीच यू। यहाँ पे एसडीएलसी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे एजाइल से करना है, वाटरफॉल से करना है, डेट वी विल टीच यू। स्क्रम में कैसे होती हैं चीजें जीरा में, डेट वी विल टीच यू। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर टू गेट इनटू द मार्केट to complete your job, that will teach you from scratch to the यू गिव एन very advanced एग्जांपल ऑफ level। ठीक है, समबडी तो इज यहाँ पे जो भी कमिंग। चीजें कवर कर रहे हैं वो बिजनेस एनालिस्ट के रेलेवेंस में ही कवर करेंगे। यू गिव एन एग्जांपल जैसे ऑफ अगर अ मैं क्लाइंट एफआरडी और कम। बीआरडी मेंशन कर रहा हूँ तो यस। व्हाट, हाँ, sorry. So आई you कुड give नॉट an गेट व्हाट। you give an example. The client is asking to design a app, right? And we as a mediator, we are communicating that to the developer, right? Now developer is again communicating that this is the requirement, this much time it will take, this is the space. तो ये भी तो knowledge हमें चाहिए ना कि हम वो languages को भी सीखे कम्युनिकेशन करते वक्त, यस, तो तो ये वो knowledge हमें वो इनबिल्ट चाहिए। वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, लाइक ऐसा नहीं कि आपने फोन किया और आपने बात कर ली। वहां पे अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे मैंने बोला ना बीआरडी एंड एफआरडी। सो बीआरडी होता है आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन, एफआरडी होता है आपका फंक्शंस का। सो जो भी आप यहाँ पे ऐप लॉन्च कर रहे हो वो क्लाइंट आपको लिख के देता है, आपको उसको लिख के लेना है पूरा पूरा। लाइक देखना आपको ये, लाइक कौन कौन से फंक्शंस इसमें चाहिए, यहाँ पे ये बटन चाहिए, इतने यूजर चाहिए, एंड बिजनेस का रिक्वायरमेंट कि वहां से बिजनेस आउटकम क्या आना चाहिए। सो ये बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर होता है कि हाउ टू डू दिस कम्युनिकेशन। क्लाइंट से आपको क्या चीजें पूछनी है, डेवलपर को क्या चीजें बतानी है, कैसे प्रोसेस को ओवरव्यू करना है। सो वो चीज के बारे में यू डोंट हैव टू वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम आपको बस ये क्या होता है बता के इंडस्ट्री में डाल देंगे एंड वो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आई एम हियर टू एक्सप्लेन द जॉब रोल्स लाइक विद वट एवर टाइम वी हैव। लाइक एक डेढ़ घंटे में आपको डेटा साइंटिस्ट तो नहीं बना दूंगा मैं यहाँ पे, बट माई मोटिव टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जॉब रोल क्या है एंड काम कैसे होता है, टूल्स क्या यूज होते हैं, वो टूल्स में कैसे आपको वो चीज करनी है, दैट ऑब्वियसली इज द पार्ट ऑफ द कोर्स दैट वी विल टेक अ फ्यू मंथ्स टू कवर। ओके, Okay. सो Oh, मूविंग फॉरवर्ड। यस excuse नेहा, me, आई विल sir. okay, so I will take the questions at the last, मतलब like 5 to 10 slides are there। मैं क्विकली एक बार उन्हें कवर कर देता हूँ, जो भी कोचेक्स रिलेटेड चीजें हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड मैं एक बार बता देता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स, एंड देन इन द एंड वी विल हैव अ Q&A। ठीक है, बिकॉज आई थिंक वी आर लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम। सो लेट मी कवर इट, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, आई विल नॉट एस्केप योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। सो एंड में जो भी आपके क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखते रहो, आप देन पूछ लेना, आई विल नॉट एस्केप एनी क्वेश्चंस। ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट IIBA एंड सीबैप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। So IIB is International Institute for Business Analysis. This is a Canadian institute, and यहाँ पे it is very reputed institute all over the world. So if you want to go longer into the business analytics career, जहाँ पे analytics नहीं है, analysis का use है, because यहाँ पे data related कुछ भी नहीं है। ठीक है, all of the thing is like related to theoretical part like communication, stakeholder management, documentation, all those things, right? So these things are covered. Data यहाँ पे नहीं है। सो ये 3 लेवल में एग्जामिनेशन होता है आईबीए का, ईसीबीए, सीसीबीए एंड सीबैक। सो इफ यू आर लाइक काइंड ऑफ फ्रेशर, यू कैन गो फॉर ईसीबीए। इफ यू हैव like 2 to 3 years of experience, then CCBA, and if you have 5+ years of experience, then CBAP. Now what happens is we provide you the training for CBAP. So ये CBAP का जो भी यहाँ पे आपको जो जो चीजें पूछी जाती हैं, जो भी सिलेबस है वहाँ पे, लाइक IIB हैज मेंशनड, एंड वो एक बुक फॉलो करते हैं BABO के, बिजनेस एनालिस्ट बुक ऑफ नॉलेज इज व्हाट दे कॉल इट। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन 3.0 है अभी। सो उसके बेसिस पर ही हमने पूरा सिलेबस मैप किया है कि क्या क्या चीजें, जैसे डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, एडेप्टिबिलिटी, एलिसिटेशन एंड कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें कवर होती है। एंड देन यू कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ योर चॉइस। ईसीबीए इज द इजीएस्ट वन, एंड अगर आप फ्रेशर हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, एंड सीसीबीए एंड देन सीबैक। ठीक है, सो वी कवर ऑल दिस थिंग्स, वी गिव यू सम प्रिपरेशन टिप्स एंड मॉक एग्जाम्स, एंड यू वुड बी एबल टू इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन। सो आपको सीबैप का या सीसीबीए ईसीबीए जो भी है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा आईआईबीए से, एंड वी विल आल्सो प्रोवाइड यू विद द ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आर एंड। तो कोचेक से भी आपको एक सीबैप का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा।
So this is kind of an additional thing that you can either go for separately, or either you can go for the business analyst role, and then you can maybe, apart from that, you can also do a CBAP to make yourself stand out. Now, when we discuss we will be doing Python in data scientist and data analyst, so why Python? Why not R or any other language like Java or C++? So first of all, Python is a multi-purpose programming language. आप data analyst के लिए भी use कर सकते हो, coding, web development के लिए, application बनाने के लिए, cloud computing के लिए, कहीं भी use कर सकते हो, scripting के लिए भी, ठीक है. So it is multi-purpose. C++ and Java data analyst में use नहीं होती है, ठीक है. उसके बाद आर होती है आपकी डेटा एनालिस्ट में यूज, बट ये सिर्फ डेटा एनालिस्ट में यूज होती है, एंड ये मोस्टली यूज होती है रिसर्च में. ओके, ओनली यूज्ड इन रिसर्च, लाइक नॉट ओनली, ठीक है, ऐसा ओनली नहीं बोलना चाहिए, बट मोस्टली यूज इन रिसर्च, ठीक है. सो सम कंपनीज माइट यूज आर, बट इन इंडिया स्पेसिफिकली इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड इन ऑल ऑफ द कंपनीज, Python is the dominant thing. What will be not able to do if we opt for business analytics instead of data analytics? Or you would be able to do anything. So I'll just make one thing very clear here. अगर आप business analyst ले रहे हो या आप data scientist ले रहे हो, तो already data analyst का सब कुछ उसमें cover हो जाएगा. Nothing from data analyst you would miss if you are going for a BA or DS role. ये data analyst तो पूरा cover होगा ही, उसके ऊपर से BA के modules and उसके ऊपर से या तो DS के modules. So these two are different, but आपका DA in any case cover होगा वहाँ पे. तो जिसने chat box में पूछा था, I hope this answers your question. So ये job roles, I think we have already discussed this, so I'll not go much into the detail here. So gathering, cleaning, processing the data, producing the report. So वही चीजें हैं, बस यहाँ पे कुछ spotting the pattern is basically analyzing the data only. ठीक है. Then collaborating with others is like let's just visualizing and presenting your data. ठीक है, producing the reports. Then data scientist cover almost same, pulling, merging the data, looking for patterns, but most importantly developing predictive models and trying like this, testing new algorithms. ठीक है. And then moving forward, business analyst. So यहाँ पे if you will like look with a little more attention to detail, collaboration is there, collaborating. Then stakeholder documentation is very important. If you will see documentation, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका repeat होगा, technical documentation. Jira and Confluence is used, so these tools would be covered. Then business requirement document, BRD वगैरह, ठीक है. So as a business analyst, your day-to-day role is collaborating, then documentation, then like teamwork and making sure that all of this thing is going. And above this, you can also, मतलब अगर आप डेटा एनालिस्ट भी हो, आपको पावर बीआई वगैरह आता है, तो आपको फिर वो लाइक डेटा विजुअलाइजेशन और वो सारा काम भी करना पड़ता है उसके ऊपर से. Then what are the salary opportunities? So for a data scientist, it ranges from 7 to 19. As you progress into your career, like after 5 to 10 years, you can become a senior data scientist. After 10 to 15 years, you can become a lead. MNC में it is a little bit slower process. Startups में it is a faster process, but the workload is like higher. So it depends upon company to company, but this is some like a range that you can expect. So moving forward, for business analyst, ranges from 6 to 30, and as you become senior, you can expect 15 plus also, but that requires a lot of experience. Okay, at least somewhat experience, even if you are a very good candidate. And then data analyst is 5 to 8, so it is more of an entry level role. So when we talk about a data analyst role, यहाँ पे बहुत strict requirements mostly नहीं होती है, ठीक है. So if you are like looking to get into the industry initially, then data analyst is a good thing to go for. And let's say after 2 to 3 years, you can either learn business modules and become a BA. You can either learn machine learning and AI and become data scientist, or you can continue as a data analyst. Okay, so depending upon your interest, after doing BA, you can choose your field, and as you progress further, you will get a raise, or if you switch as a BA or DS, you will get a hike in your salary. Then moving forward, why there is a demand for data analyst? So again, I think I've explained this already, because there is a demand for data, and we know we want people who can understand this data and make decision based on the same. So that is why there is a demand for data scientists. Same reason for data scientist, and also that AI and ML thing has just skyrocketed after ChatGPT. So a lot of things, NLP and generative AI is now highly in demand. So that is why we have added that in our curriculum, and that is what poses the great demand for data scientists. For business analysts, the demand has always been there for the functional part, but now that the decisions are made based on data, so a lot of demand is for business analysts who are good in communication, good in stakeholder management, but also have knowledge for data and tools. Okay. So moving forward, which companies hire these experts? Okay, so these are some of the companies we have mentioned here. Okay, like MNCs, but it is not an exhaustive list. Like a lot of small companies and mid-scale companies are also hiring. And these some companies, Capgemini, Genpact, Accenture are hiring for their clients. So they will like give you a project for some client that they are working in, जिसके वो लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसको जो भी IT सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें डेटा एनालिस्ट के रोल पर आपको मोस्टली दे देंगे कोई प्रोजेक्ट, ठीक है. बट Amazon है, HSBC, लाइक दे आर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड. सो HSBC आपका बैंक है, Amazon आपका आपको पता ही है, ठीक है. सो these kind of companies will hire for themselves, ठीक है. So banks
are actually hiring in a lot more because finance में every data, every transaction is recorded. ठीक है, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर में दिस इज अ वेरी बिगर एडवांटेज कि जो भी डेटा है वो रिकॉर्डेड रहता है. वाइल इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में कभी कभी होता है कि आपके अगर जो सेल्स पर्सन है या जो भी आपका सेल है वो अगर कोई वेंडर है जो लाइक स्ट्रीट वेंडर है या आपका कोई टीयर 2 सिटी में शॉप है तो वहां पे आपके पास इन सम केसेस रिकॉर्ड नहीं रहता है. बट जो भी आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन ये सब है वो आपको बहुत ही अच्छे से मैनेज रहता है. ठीक है, तो डेट इज सम एडवांटेज दैट दिस थिंग्स है. देन some of the companies again for business analysts, DXC, Accenture, kind of IT services based companies, and then IBM and Dell, these are kind of the product based ones. Then data scientist experts, so these are some of the companies. Again यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो MU, Sigma, Tiger, Absolute and Data. So these companies are actually based on analytics. India की ही है ये mostly and came into the market after 2015 and they solely work on data. So JP Morgan, American Express is financial company, McKinsey is a consulting company, Wipro is a IT company, but MU, Sigma, Fractal, Tiger, Absolute are data company. So ये company ही data analytics and data science पर ही based है and that is why they hire a lot of people from data science domain. Then why Coex.live? So as a platform, we will provide you with relevant skills. So जो भी हमने अभी तक skills देखी हैं, जो भी tools, terminologies हैं, they are relevant with the market. ऐसा नहीं है कि पहले जैसे कॉलेज के करिकुलम कभी कभी 2 to 3 years लगता है उन्हें अपडेट करने में, वो यूजीसी से ग्रांट वगैरह लेने में. That is not the case with us. जो भी skills market में आती है नहीं, जो भी हमारे ट्रेनर से हमें पता चलता है कि these things that market is looking for, we try to inculcate them as soon as possible within our curriculum. ठीक है, so you will always get the relevant skills to advance your career. You will get a certificate. So a certificate आपको मिलेगा that you can add in your LinkedIn, add in your resume and showcase that you have done this course. You will learn live. और again that I have mentioned कि यहाँ पे live session होगा, जैसे मैं आपका session यहाँ पर ले रहा हूँ. So you can ask anything you want to. Learn from the experts and enrich your life. So you will always learn from the experts who are already working in the industry. You will get recording for each and every session. जो भी आप session attend करोगे उसकी आपको यहाँ पर recording मिलेगी आपके LMS पर. LMS क्या है? We will just discuss in next slide. And doubt clearing sessions would be there on Monday to Friday on a daily basis. ठीक है, so Monday to Friday 9 to 10 in the evening you will have your doubt clearing session. Moving forward, LMS overview. So LMS क्या है आपका? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज जहाँ पे आपको एक लाइक अपने ईमेल और अपने एक पासवर्ड से लॉगिन करना है. वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा. आपका जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है, जो भी सेशन आपने अटेंड किया है उसकी रिकॉर्डिंग्स, आपकी जो भी असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं वो, आपके नोट्स, एवरीथिंग दैट यू वांट टू एक्सेस वो आपके एलएमएस पर आपको मिलेगा. उसके लिए आपको लॉगिन आईडी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे. एंड वहां पे विद जस्ट लाइक अगर आपके पास कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने लैपटॉप या फोन से कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यू विल हैव रेगुलर सेशंस ऑन वीकेंड्स लाइक सैटरडेज एंड संडेज. मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइन एंड कंफर्ट लेवल. Then doubt solving session, I think I have already covered 9 to 10 in the evening on a daily basis from Monday to Friday. ठीक है, सैटरडे संडे नहीं होता है बस बिकॉज रेगुलर सेशंस होते हैं, बट मंडे टू फ्राइडे दे आर ऑलवेज देयर. सो अगर आप सैटरडे संडे कुछ लर्न करते हो एंड मंडे यू आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, एक्सेल का कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे थे जो टीचर ने बताया था लेकिन आपके में रन नहीं हो रहा है, टीचर ने तो बता दिया आपके में हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ फॉर्मूला गलत हो रहा है, जस्ट ज्वाइन द डाउट सॉल्विंग सेशन ऑन मंडे इटसेल्फ एंड वो आप वहीं पे क्लियर कर सकते हो. ठीक है, स्क्रीन शेयर करके या कैसे भी पूछ के. देन टेलीग्राम ग्रुप वुड बी देयर फॉर ईच एंड एवरी क्लास. तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहाँ पे आप कुछ भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो. यानी जहाँ पे आपके डाउट सेशन का लिंक, आपके वैसे नॉर्मल सेशन का लिंक वहाँ पे रहेगा एंड आपकी जो डेटा सेट फाइल्स है वो भी शेयर हो जाएंगी वहाँ पर. ठीक है, सो टाइम टू टाइम कुछ भी अपडेट होता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता रहेगा एंड आपको भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हो वहाँ पर. Moving forward, WhatsApp versus Telegram. So it's not kind of versus competition, but just to like give you a glimpse कि हम लोग Telegram group क्यों बनाते हैं. So it gives you like a little bit more capacity to use file sharing. आप फोन नंबर और यूजर नेम अपना प्राइवेट रख सकते हो. लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में एवरीवन कैन सी व्हाट इज योर पर्सनल फोन नंबर. एंड वन मोर थिंग कि इन व्हाट्सएप यू हैव टू कीप अ गूगल ड्राइव बैकअप. तो अगर आपका गलती से फोन रिस्टोर हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, आपका ड्राइव बैकअप नहीं है तो वो पूरा डिलीट हो जाता है. बट टेलीग्राम का क्लाउड स्टोरेज होता है, आप कहीं से भी लॉग इन करते हो किसी भी फोन या लैपटॉप से, आपको वो सारा डेटा आपका स्टोर रहता है टेलीग्राम में, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, दिस इज वन ऑफ मेजर एडवांटेज ऑफ टेलीग्राम लाइक अबव व्हाट्सएप एंड दैट इज व्हाई वी ट्राई टू क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन या क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो. Now GitHub profile. So GitHub is a code hosting platform for like collaboration. So ये जो repositories, branches, commit क्या है डिटेल में हम लोग कवर करेंगे before Python as we have mentioned in the roadmap कि GitHub में Git क्या है, GitHub platform as a platform क्या है. But as a data analyst initially we will help you to create the profile and upload your projects. ठीक है, so आपकी प्रोफाइल कैसे बनानी है, we will help you to sign up with GitHub. Here if you will see you can just replace this with your own professional image. ठीक है, देन यू कैन शोकेस योर स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स हैं लाइक सम, जैसे यहाँ पे
this person has mentioned. ठीक है, so JavaScript and I think this is Linux and then VS Code. So ये सारी script, Docker, ये सारी skills you can mention and projects that you have worked upon. I think yellow should be better here. Yeah. So ये सारी skills and ये सारे project you can mention and this shows how active you are on GitHub. ठीक है, so moving forward, this is kind of the projects that we are providing, but like this is not a exhaustive list. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखे हैं और ये 4 प्रोजेक्ट ही चलते रहते हैं और ये 4 ही हैं. इसके अलावा आपको बहुत सारे मल्टीपल असाइनमेंट मिलेंगे एंड दिस प्रोजेक्ट लिस्ट जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग अपडेटेड. सो जो भी हम लोग को अगर किसी कंपनी से शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कोई एक्सेल का प्रोजेक्ट आ जाता है या कोई असाइनमेंट आ जाता है, सो वो हम अपने लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं सो दैट स्टूडेंट्स आर able to do it. ठीक है, so this is the list of like example of the projects that we cover, but we keep on updating this list and apart from this project you will get multiple assignments. ठीक है, so 4 projects and 5 to 6 assignments you will get for Excel. Now moving forward, we have projects for SQL. So SQL के लिए ये particular projects रहेंगे आपके. So as an again, then this is some of the example of the project. You will get separate projects and assignments also. Same with Python and same with Power BI, sales, automobile orders, but you will get more and Python and data science. ठीक है, this AB testing is a very important thing that is done in the market. ठीक है, so this is an important project in Python. So this is also be included and there would be some mega project जहाँ पे आपके 2 to 3 modules you will test simultaneously. तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है एक्सेल एंड एसक्यूएल दोनों यूज करना पड़े. सो दोस काइंड ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स वुड आल्सो बी देयर. ठीक है, इन डेटा साइंस आल्सो आई मेंशन दिस 4 काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर, बट आपको एनएलपी के लिए देयर वुड बी डिफरेंट प्रोजेक्ट, टाइम सीरीज के लिए अलग प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग के लिए अलग, मशीन लर्निंग के लिए अलग. ठीक है, सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर यू टू वर्क अपॉन वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. देन प्लेसमेंट एक्टिविटीज वुड बी देयर. सो आपका लिंक्डइन एंड रिज्यूमे मेकिंग के लिए गाइडेंस है, इसके लिए अलग से आपका सेशन होगा जहाँ पे ट्रेनर विल गिव यू ऑल द डिटेल्स कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कैसे बनानी है, you should be active, maintain कैसे करनी है, how your profile picture should look like, what certificates you need to mention, educational background में क्या चीज आपको mention करनी है, same with the resume, like what things to mention in resume, what things to not mention in resume. ठीक है, how to tackle your experience, how to make different resumes for different kind of job roles, those kind of things we will teach you. Then interview preparation and mock interview would be there. So in the mock interview part, you will get the experience of a real life interview. So you will you have to mail the team and you can, after completion of the course, attend the mock interview where you would be asked questions and depending upon your score you will get the placement assistance. So in mock interviews you can appear, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक फीडबैक मिलेगा that these things you are doing good, these things you are lacking you can improve and how to improve, suggestions would be there. And once you score more than 60% we will be getting into the placement assistance department. So in the placement assistance our placement team will support you at each and every step. जो भी आपका जॉब ओपनिंग्स आएगी we will forward your resumes. जो भी आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो उसमें अगर आपको कोई असिस्टेंस है, there is assignment, there is any a problem with the HR, if you are not able to को कोई resume related है, कोई issue है, even after the making of the resume, अगर आपको कुछ updates चाहिए resume में, आपको LinkedIn के लिए कुछ help चाहिए, so our placement team will support you at each and every step. And this is how your sample certificate will look like. So this ISO certification would be there on the certificate. So this certifies the certificate. ऐसा नहीं है कि we are just as organization printing and giving it to everyone that is paying us amount. ऐसा नहीं है. Okay, so we are certified with ISO. Okay, and this is the Power BI certification, but you will get separate for Tableau, Excel, SQL, Python, and for data analyst and business analyst. Okay, so for most of the modules you will get different certifications. I think for DA, that is data analyst, you will get 8+ certifications, and for DS and BA you will get 10+ certifications. If you need the list of certifications that you will be getting, you can anytime connect with the admission counselor. They will provide you with all the details, like what all certifications are there for particular courses. So I think that concludes the session. You can follow us on Facebook on this given link. You can follow us on Instagram. You can connect with us on LinkedIn. You can visit our YouTube channel where we upload some content for you to review. So some demo sessions are there for particular different modules. If you want to watch them, you can subscribe to our YouTube channel. You can watch them there also. Okay. So thank you for connecting with us, everyone. I think I was able to answer some of your questions. I tried my best and a lot. Thank you for I'm taking all the questions. Don't worry. Okay, so thank you everyone for joining and you gave your valuable time to listen to me. I just hope that I was able to cater what you wanted to do, and our motto was here to give you a detail about the job courses, the job roles, and what is the syllabus and what is a Coex platform we are offering you. Okay, so that was all for now. Now we can proceed with the Q&A sessions. Okay. Sir, so basically I carry around 8 years of work experience into finance. Okay. And I'm in the salary bracket of 15 to 20 LPA. So I mean, going for business analyst will make sense for me, or do I continue in the same domain itself? So what is the scenario?
Okay, so considering that you are already working in a particular finance domain, right? So finance domain is Sorry to interrupt actually, but I have also completed my MBA as well into finance. So I carry the complete experience into finance only. So that is the case. okay. That is a very good and great to have thing. The thing is that if you have a lot of experience and you go for a certification like a business analyst certification, or in case a CBAP kind of certification, because you are eligible for the same, okay, you can get a lot more hike in your particular department. And if you want to go into a, let's say you are into the finance department, so it is not like you would go into a different role of a BA and your experience would become null. So if you're going for a BA in kind of a financial institution, let's say HSBC, American Express kind of institution, who is already working in finance, you are already having experience in MBA in finance. Over the top, you have a business analyst road like certification, then you have the knowledge of a business analyst. So that gives you a lot more credibility into the organization. You might get a very senior role as a business analyst if you already have the experience in the same domain. Also, if you have a like master's degree or a management degree. Yeah, thank you. Okay, thank you, Imanshu. And so Nana is asking, I have a gap of 3 years after graduation. I was preparing for government exam. Do companies hire me after completion of the program? So see, Nana, if you have a gap, you have to like sometimes be honest and tell that you are preparing for the exam and now you are looking for different career opportunities. So in that case, the thing is that you can apply. There is no such hardcore things in corporate that you cannot take a break or something like that. Okay, you have to make sure that you are very good with the project part. You have to communicate it very effectively. Then even though there was a gap, but you have done the projects, you have done the internship kind of program. So adding to that, we will also provide you internship certificate for completing the projects. So you have done the internship program, you have learned all these things, and you are very much equipped with the skills. At the end of the day, for the company, skills matter a lot, and not just your educational background. So if you are able to effectively communicate that your gap of 3 years is not a hurdle for you to do all this data analyst kind of thing, then it is not something that will bother you in a long term. So maybe out of 10, 1 or 2 companies might not shortlist you, but the like pool is still very bigger and you can get shortlisted. And once you get into any of the company, let's say initially you have to get into a startup, and after 1 to 2 years, you will obviously get a better job pay and hike if you switch from, let's say, a particular company to a MNC or that kind of thing. Okay. So initially you will have to work a little bit harder, but it's not like no one will hire you. Salman is asking, sir, is there scope and growth in data analyst in business? Yes, said okay. So there is a lot of scope. As I mentioned, कि पहले लोगों के पास एक फोन होता था, now they have multiple devices. Okay, so data generation increasing day by day, and they want people who understand data. Every industry जो पहले भी data पर उतना focus नहीं कर रही थी, like even the small companies like edtech companies such as ours and all other smaller companies like Swiggy, Zomato are not smaller companies, but they are not comparable to Google and all those things, right? But even Swiggy, Zomato, Misho, these type of companies are hiring actively for data analysts and data scientists, right? So each and every domain of the company is also hiring for data related role. That is why the importance stays there. Okay, so okay, a lot of questions. Okay. Ashi Kalra. Okay, so I hope I'm pronouncing your name right. Okay, so sir, I have completed MSc in economics. Which course would be more suitable? So if you have done MSc in economics, I think business analyst is like something that strikes directly to your mind. So you can explore BA as a course; it would suit you. But for data analytics, also you can go. So data analyst is kind of a part of a business analyst also. It is not like you will miss data analytics if you go for a BA course. So if you have a like economics degree, why not go for a BA role? So that would be my answer to the question. Unless you have a very great interest for mathematics, you wanted to do mathematics and coding, then data scientist, but very suitable is business analyst. So I think Vardhana is asking, hi sir, I've done BSc from bioscience, but I want to change my domain. So is it okay for me to go? So see, bioscience is something that you have done BSc from. Yes, you can. So the thing is that whatever degree that you have, data analyst is mostly an entry level role. Okay. So first of all, it is not very much dependent on your degree. If you are from a science background, it is a good thing. Okay. So you can change your domain. You can go into data analyst in any domain. And if you get to go into data analyst into, let's say, agro based or companies that are into the bio market, then like, it will be easier for you to get into the market. So regardless of your bioscience degree, you can go for a data analyst role. It won't be a hurdle for you. And if by chance you get into bioscience, because I'm not sure about how bioscience and data works. For data science, I know how bioscience works because there's a lot of data and agriculture in like the plant leaf detection, all those things are there. Gauri C looking, sorry, is writing, how many projects are covered in the course curriculum? So there are a lot of projects that are covered. So for each and every module, there are like 3 to 4 projects and 5 to 6 assignments. And for data science part, like the ML deep learning kind of things, also there would be like 10 to 12 projects. So for DA, I would say
15 projects, around 15 to 20 projects, and additional assignments would be there for like particular topics. In Excel, you will get separate assignment. For SQL, you will get separate assignment. And for data scientists, you can like add a few more. And in business analyst, you will get a few assignments and you will also get case studies. Okay, so there would be a lot of assignments for you to do. Don't worry. Even if you are overwhelmed, you want to do more, we will provide you with additional also. Devendra is asking, sir, you didn't give answer to my question. Okay, I'm really sorry, Devendra. I might have missed. So where did you ask? Is this good career for commerce background? I think this was your question, right? Okay, no, your question was, sir, now I'm doing job as accountant. I want to pursue DA. Is this right? Good job opportunity for, okay, so you're working as an accountant, you want to go for a DA role. Yes, you can obviously go for a DA role. So accountant, you are working, I'm assuming you're working as accountant in a bank or something, or maybe in another industry, but you have the basic know-how of the financial transactions. So you can obviously go for a data analyst role, and you can target financial companies like insurance companies, LIC. I don't know if they hire directly from corporate, but HSBC, all kind of JP Morgan kind of banking institutions, and Max Insurance and all the insurance companies. Then I hope Devendra, I have answered your question. Sorry, I missed it earlier. Really sorry about that. Vandana is asking, sir, please could you recommend my course depending upon my degree? Oh, okay. So Vandana, what is your degree? You've done BSc Bioscience. Oh, okay. So you have, okay. So yeah, this is actually the QR code. You can scan and do the registration. And if you like do it right now, you will get 2,000 rupees additional discount on whatever the fees has been offered by you. So it is a chance for you. If I have cleared all your doubts, you can do the registration part of the process. And if you have any questions, you can anytime connect with your admission counselor. Yeah. So moving forward, I was taking your question, and Vandana, sorry for a wrong name. Vandana was asking recommendation based on a degree. So you said that you have done BSc Biotech, Bioscience, right? So go for a data analyst degree. Okay, not a data analyst degree, but data analyst course. And once you're done with it, try exploring data science, in my honest opinion. Like if you have some sort of science background, you have done some physics, it won't be that hard for you. Actually, physics and chemistry and science are actually a lot more harder than the data science. So even the science word is there, but data science is not that difficult. Okay. So try to go for a DA role. And if you think like explore machine learning, if you think you can do machine learning, then go for a data scientist role in future. How many mock interviews are arranged if you are not scoring up to the mark? So Sneha, there is no such thing as the limit for mock interview. We try to make sure that in minimum number of interviews you're able to clear it, but you can give as long as you're not placed. We won't stop you from appearing in the interview. So there is no such policy that if we will give you two chances, if you are not placed, we will just stop all the things. You can keep on giving it until you are placed from our end. Even if you are placed and you want to, let's say, improve your package or something, you can still apply for the other job openings, but there is no such limit for mock interview. Shanky is saying, I'm interested in data analysis. What is the process to take admission? Okay, Shanky, you can scan the QR code and do the registration, or you can, the better thing would be to communicate with the admission counselor. So I think Gaurav would be here. So Gaurav sir is your senior admission counselor, and he will take all your enrollment related question, fees related question, process for admission, whatever the payment structure, whatever the things are there. So I think, Gaurav, are you there to take the questions? Yeah, sure. So apart from fees or apart from enrollment, everything is clear, guys? Anything you want to ask regarding placements, anything else? Okay, so Salman is asking, do we have a placement guarantee? Okay, I think Gaurav will answer this question to you also. Sneha is asking, even if you're getting here, we can join doubts clearing sessions. Yes, as long you have all the things and support for up to 2 years. Up to 2 years, you can apply for the job. You can you have access to all the recordings. You can join all the doubt solving sessions, and every new thing that is added to the curriculum would be provided to you. Yes, Gaurav, on to you for the other questions. Yeah. So for the placement part, guys, first of all, there is a like simple process, like 3-step process. Okay. First of all, we'll arrange a mock interview. So once you are done with the projects part, once you are done with the assignments, projects, learning part, we'll arrange a mock interview. And mock interview, see what is your area of improvement, where you're lacking. If we feel ki now you're good to go, let's suppose now Kinjal is good to go, then we will helping with the profile building, in which resume building is there. LinkedIn profiling is there, GitHub profiling is there. Okay. And if we feel कि नहीं there is some area of improvement is there, so हम साथ मिलकर उस पे काम करेंगे. Okay. If we feel कि यार SQL में कुछ काम करने की जरूरत है, Power BI में कुछ काम करने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट्स देंगे ब्रश अप करने के लिए. आप ब्रश अप करो, फिर से मॉक इंटरव्यू दो, नो इश्यूज. ओके. बट वंस वी फील कि यार नाउ
Kinjal is good to go. She's like good to go. She is very well prepared for the live interviews. Then we'll help you with the profile building part. And once we are done with the profile building part, this is the second step. Once we are done with the profile building part, then we'll move forward for the opportunities. For that, we do have a dedicated placement team over here. Okay, so their work is to filter everything for you. So they will coordinate with the recruiter. They will filter everything for you. What is the requirement? What is the opening? So if they find out that this profile is matching with Kinja's profile, so we'll share Kinja's resume to the recruiter. And once it's shortlisted from the recruiter, you will receive a call or email. Okay, so ये process रहेगी. So here you don't need to worry about कि आपको खुद से कहीं पे apply करना होगा after course. No, it's not like that. Here we will be taking care कि आपका resume एक सही हाथों में जाए. Okay, and बात रही आपकी guarantee की. So see, मैं आपको frankly बताता हूँ. Guys, यार, I'm not using that marketing gimmick word कि I'm giving the job guarantee. ये वो no. What I'm telling you is like कि I'm ready to give the genuine support. Coex are really helping for the genuine support. Even we are helping for the lifetime placement support. What mean by lifetime is कि जब तक आपको job नहीं मिलेगा, जब तक आपको placement नहीं मिलेगा, तब तक we will be helping you with each and every support. फॉर एग्जाम्पल, परसों आपका इंटरव्यू है, मुझे आज बताओ कि सर हैविंग इंटरव्यू, मुझे कुछ टास्क दिया है, वो कंप्लीट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, विल कनेक्ट यू विद द पर्सन हु इज अ कंसर्न पर्सन, विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी डाउट्स, राइट? सो उतना सपोर्ट, द जेन्युइन सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग. इफ यू वांट दैट जेन्युइन सपोर्ट, we are always there for you. ठीक है? And for the rest part, there is no such mediator part here कि आपको कुछ अगर डाउट्स आता है तो आपको मेल करना, बट नो थिंग लाइक दैट. टेलीग्राम ग्रुप रहेगा आपके लिए, आपके पास आपकी जो काउंसलर है उनका नंबर डाली रहेगा, ऑपरेशन टीम का नंबर रहेगा. So everyone is connected with you over WhatsApp or just single call. So if you have any doubts, if you have any concern, just feel free to ask. Okay, so there is no such mediator here. So that's why I'm focusing on that genuine support thing कि यार बहुत बार ये होता है कि आपको बस वो गारंटी के नाम के ऊपर इन्फ्लुएंस करा जाता है टू टेक एन एडमिशंस. ओके, बट आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जेन्युइन सपोर्ट वी डू प्रोवाइड फॉर अ प्लेसमेंट, सो दैट much assurance I can give you कि I'll be taking care your resume goes in right under recruiter. Okay, so that much assurance I can give you. Okay, so hope placement part is clear. Gaurav, I have a doubt. Like, placement part is clear. We got a job. Now we are in the company. We are working over there, right? But शुरुआत में we will be having troubles with the work, or it may happen that because of some pressure or nervousness, we may forget or we may tend to not perform well in the initial stages, and we are more scared to lose the job because of the low performance or anything. So, what kind of support, like in case if we get stuck in our work at some point of time, maybe at that time we may not approach you, but after the business hours or office hours, can we get connected with you guys and get our doubts solved? Okay, no issues, Neha. See, what mean by lifetime support की will be there for you. Okay, after getting into the job, अगर आपको job मिल भी गया है, if you're having any concerns related to anything, okay, if you feel कि ये चीजें Coex help कर सकता है, just ask to me, ask to the person job जिनसे connected हो. Okay, so they will be taking care कि वो आपका जो problem है, जो concern है, वो resolve हो by anyhow, by hook or by crook. Okay, so that is not the concern. ठीक है? What mean by lifetime is कि support is there for lifetime. If you need any kind of support, just let me know. We'll be there for you. Clear, Sneha? Yeah, thanks, Guru. Okay, perfect. So guys, anything else? Like any doubts, any concerns regarding placements part? Okay, how many interviews can be scheduled or how many jobs can we apply for? Okay, so as I told you कि हम सपोर्ट जब तक देंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा, राइट? सो देयर इज नो सर्टेन लिमिटेशन. सी, आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट हियर. ओके, आई डोंट वांट टू गिव एनी ओवर कमिटमेंट हियर. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रैंकली कि you need that kind of support ki I'll be taking care of your resume goes in right under recruiter, because see, I can request a recruiter, but I can force them to hire you, right? मैं उनको request कर सकता हूँ कि ma'am sir, these candidates I'm having a good profile, please like just come, just ask them for the interview. If you feel that is fruitful for your profile, then just hire them. So I can request a recruiter. Even वो transparency में maintain कर सकता हूँ कि during your sharing profile to the recruiter, मैं उसमें आपको CC में रख सकता हूँ, so get to know कि कहाँ पे मेरी profile जा रही है. Okay, you'll be having a direct contact number of or placement manager like Siddharth will be taking care of each and everything, right? So it's not something कि कुछ चीजें hidden रहेगी, सारी चीजें आपके साथ transparent रहेगी. So that is not the concern.
can we place in our state like from Odisha? Okay. Okay, perfect. So see, placements depend on the requirement. Okay, if you're having a specific filtration that कि आपको चेन्नई में job चाहिए, ओडिशा में job चाहिए, okay, so it will take time because you know कि आपके place पे कितनी companies है, कितनी companies नहीं है, okay, but I'll be making sure कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, अगर आप कोई भी मेट्रो सिटीज में हो तो definitely there is a high chances to get in the good company with good package. Okay, but if you're having a specific requirement, then we can focus for work from home opportunities as well. Okay, if you feel कि नहीं मुझे घर पे बैठ के ही करना है, if you have any requirement for work from home, then definitely we'll go ahead with this. Okay, आपका preference हमेशा consideration में लिया जाएगा. If you feel कि मुझे work from home ही comfortable रहेगा, so if you're having any requirement, we'll tell you कि they are hiring for work from home opportunity, just apply for that. Okay, or else we'll share your profile to the recruiters. So that is not the concern. Okay, so I guess hope everything is clear for the placements part. ठीक है, perfect. So now I'll tell you with the enrollment process. Okay, so yeah, so if everything is clear, तो आपके जो भी concerned person है, जो भी आपके साथ connected है, आपके counselor, okay, just connect with them. Okay, they will be helping with the payment structure. We do have options for EMI, credit card, EMI one-time option, so that is not the concern. Okay, just the simple process you need to do is like just share your full name, email ID, phone number along with your payment screenshot. Okay, so फिर आपका onboarding होने के बाद you'll receive a call from operation department and they will be helping with you the credential part. So आपको जो भी LMS का access है, Telegram group access, everything will get. Okay, and if you want कि batch कब start होने वाला, so from next weekend onward we are starting a batch. Like this weekend we're starting with the morning batch. Okay, guys, anything else you want to ask? Everything is clear? What about fees or BA? Okay, Abhishek, you can connect with the concerned person. He will be helping with the fee structure and all. Okay, sure, Sneha. Perfect. So hope everything is clear. Sure, Salman. You can connect with your concerned person, or you can just reach out to me. Okay, so I think that wraps up today's session. Thank you, Gaurav, for taking all the placement related and admission related questions. And thank Thank you, you everyone Saurabh. for joining, giving your valuable time to come here and listen to me. And I hope we were able to answer all of your questions, at least most of your questions. And all the best from my end to your future career endeavors. And I hope you will enjoy your journey with Coex. So thank you everyone, and a very good night to all of you.